the world from the eye of the horse. If you Alexander the Great, then I am the force. Coming straight from the mud like I am a lotus. So हाथियों का बल कैसे सकेगा तू मुझे रोक अब. देख तू कैसे मैं लड़ूं, तुम लोगों से ऐसे ना डरूं. तरूं मैं जैसे मैं तरुण, पानी पे चलूं मैं जैसे मैं वरुण. चाहे मैं जीऊं या मरूं, जो करना चाहूं मैं वही तो करूं. आता है तू ना करीब, तू बेटी चीप, जब ना कटे ना तेरी ये जीप. Better believe you're gonna bleed. Pick up a seat, get in your team. I'm the king of kings. Brother in arms in a battle. You all gonna die if you act like a vandal. Bring the realms to reality from every angle. This is the public service announcement from Mumbai to the rest of the world. I am a Raja. I am the Raja. भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना. तू मेरी तरफ आना. आ गया तो होगा फिर तनाजाना. ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना. 'Cause I am the Raja. 'Cause I am the Raja. What do you see? I'm more than an average man. I'm a maverick, I can grow flowers on a barren land. Break a mountain with my bare hands and step back and cause a literal avalanche. Should've been about us traveling. अष्टभुजाएं मेरी जैसे मैं tarantula. ना है कोई तोड़ मेरा जब से पूर्वजों का ज्ञान मिला. मेरे जैसा मिलेगा कोई ना तू और चाहे जो भी था सबकी कब्र मैंने खोदी. क्या तुम लगाओगे बोलियां, कम पड़े गोलियां. चंद्रगुप्त ने मौर्य या दिला तू लोरिया. Come to me and you just gonna die. That's really a given. I am invincible and you are invisible. See, that's really a difference. Get out of my way or leave the world. The choice is yours. I don't kill my enemies, I play with them. That's what the toys are for. From Mumbai to the rest of the world, I am the Raja. भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना. तू मेरी तरफ आना. आ गया तो होगा फिर तनाजाना. ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना. 'Cause I am the Raja. 'Cause I am the Raja. Need a lot of room for that. Exactly. That's totally true. I agree with that. It's all in audio. Yo, welcome to the first ever Riot Games community event. I'm so excited because today we're going to be celebrating the first ever Indian agent in the Valorant universe with me. I have my buddies Abish Matthew, Ocean Sharma, Mamba Ehsan, and guys, how are we feeling? Very, very excited. I'm most excited about the fact that I play Sage a lot. And just to find out that there is an Indian character that I can probably connect with. I think I might want it. Yeah. Pocket Sage. It's Pocket Sage. You know, Pocket Sage. What's amazing is that Riot Games has always created games that are like, the fans go mad about it. I think their attention to detail on their diversity is what truly makes them global. I agree. And you know, the best part about Harper is going to be the characterization and the customization and obviously the abilities and the powers that are coming up. It's not just his personality, but everything combined together, it's going to be off the charts, to be honest. Dude, I'm just excited for Harper to join Protocol right now because I've been asking for a controller since forever. Yeah. And everybody was asking for a controller because we had initiators, duelists, everybody. And as a controller, me and myself, bhai, mujhe chahiye tha, and I have it now. Yeah, based on all the excitement I'm seeing with players wanting to play Harper, I just want to say, Viper who?
Today's going to be exciting, guys. We have a whole bunch of events planned up, okay? There's one killer exhibition match between players that you already know and love. There's a bunch of fun interviews. There's going to be a bunch of jokes, hopefully. So all in all, it's going to be a very fun stream. So grab your popcorns and we will see you at the end of the stream. All right, watch the full thing. See you guys. Before we go to the big reveal, it's time for us to meet the guys who make, and the girls who make Valorant truly international. Please give it up for Raka. Give it up for Zaya. Give it up for Model. Give it up for Scout. How are you guys doing? Amazing. Yeah? Okay, आपके पास mic है, so I might as well start with you. Have you played Harbor so far? Yes. And do you think you're gonna start playing controller a little bit more? Yes, definitely. Better Viper है वो. Do you also play in the same manner as Raka does? कि आप थोड़े peaceful तरीके से खेलते हैं? Especially when मैं you play थोड़ा Harbor. सा थोड़ा पीसफुल तरीके से खेलती हूँ. आई डोंट थिंक राका जैसे मैं नाइफ करने नहीं घुसती हूँ. मेरे को डर लगता है यार, मैं नाइफ करूंगी फिर वो आके मुझे नाइफ करेगा बाद में. So I'm peaceful with everybody. So yeah. Talking about the most peaceful game. अरे यार. You had it ready. Yeah, I was just like peaceful में कब ये आएगा? कब बोलना है? Okay, honestly, do you think you're gonna play Harbor like a controller, like it's meant to be, or will you go all out? I guess वो सबके प्ले स्टाइल पे डिपेंड करता है. बहुत सारे लोग एग्रेसिव खेलना प्रेफर करते हैं एंड वो लोग वैसे ही खेलेंगे जो जैसे ये टीम जैसे नहीं खेलेगा. अकेला slide remarks. अपने फ्रैग के लिए वॉल बनाएगा ये सिर्फ. हाँ, खुद घुस जाएगा अंदर वैसा. बट आई गेस आई विल बी मोर लाइक अ टीम प्लेयर. इसमें भी हाँ. Yeah. Okay, let's go to the trash talk. हो गया Scout के बारे में. Scout, what do you have to say? Are you gonna play duelist with Harbor? कर लेंगे. मेरे को जितना लग रहा है, जैसे राका ने बोला कि वाइपर का अपग्रेड वर्जन है. मैंने खेला नहीं अब तक, तो मैं यहाँ पे पहली बार एक्सपीरियंस करने वाला हूँ. Oh, perfect. और मैंने जितना पावर्स देखा उसका आई थिंक वो इनिशिएट भी कर सकता है अच्छा खासा. तो मैं बोलूँगा बेटर वर्जन ऑफ ब्रीच और वुमेन मिक्सचर. You know, one of the abilities that Harbor has is the smoke wall, जिसके through bullets अंदर आ नहीं सकते. Yeah. So now, would you use it for yourself, or would you be nice enough to give your other teammates? Yeah, Now that you said you'll be a teammate. Yeah. So obviously for the team. Totally. Conviction. खुद के लिए नहीं. मैं पहला घुसता नहीं हूँ कभी. अच्छा. क्योंकि मुझे मालूम है मैं पहला घुसा तो मारा. Yeah, I'm more like I feel कि Valorant is like a game of chess. वैसे सोच के मैं चलता हूँ कि दिमाग से खेलो. Okay, your fans, do you see them picking Harbor as a first choice just because थोड़ा Indian relation है? Yes, Yeah? definitely. मैं जैसे बोला वाइपर का बेटर वर्जन है. इनिशिएटर की तरह भी खेल सकते हैं उसे और डुएलिस्ट की तरह भी खेल सकते हैं. बिकॉज उसकी एबिलिटीज मैप के बहुत सारे स्पेसेस कवर कर सकती है. तो तुम मेरी स्टाइल से खेलना है, स्नीक अप करके नाइफ के लिए भी ट्राई कर सकते हो. बट खुद इनिशिएट भी कर सकते हो और डुएलिस्ट को ले जाके मार भी सकते हो. तो यस, डेफिनेटली बहुत ज्यादा पिक होगा. Full pack. What about your fans as such? Because especially considering कि आप Sentinel, what role do you I use? also usually play controller या फिर duelist. Depends on my mood. क्या फील कर रही हूँ मैं आज? Do I want to go in and kill people? जो कि होता नहीं है usually. जो कि बहुत मूड से जाती हूँ. फिर फर्स्ट गेम duelist पिक किया, किसी को मारा नहीं. नेक्स्ट गेम controller. Brim. I have a question for all of you together. Do you think the introduction of Harbor will somehow change the meta? Because some characters, like you were saying, get buffed, some of them get nerfed. Do you think this is going to change the meta a little bit? डेफिनेटली आई गेस अभी फिलहाल तो बहुत बफ्ड लग रहा है मुझे हार्बर. एंड मेक सेंस. सब लोग ट्राई करना चाहेंगे एक बफ कैरेक्टर एंड जीतना चाहेंगे. बट विद टाइम आई एम डेफिनेटली श्योर कि उसको थोड़ा नर्फ किया जाएगा या तो अदर कंट्रोलर्स को बफ किया जाएगा सो दैट थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव में उसको फिट कर सके. Valorant is कि वो कम्युनिटी सुन के जल्दी अपडेट्स करता है. सो इट बैलेंस करता है सारे कैरेक्टर्स. So you think the Valorant community is like they are listening and they're Yes. always balancing? बहुत जल्दी अपडेट्स आते हैं, पैचेस आते हैं जिससे बैलेंस होती है एबिलिटीज. तो इसलिए मजा आता है खेलने में. कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि कोई एजेंट एक्सट्रीमली बफ्ड हो और सब लोग को ऐसा हो अरे यार कैरेक्टर बफ्ड है. मतलब अगर बफ हुआ है कोई ना, अगले हफ्ते हो गया बैलेंस हो गया. ऐसा नहीं कि आप एक कैरेक्टर से लेके पूरा बुली कर सकते हो. अगर ऐसा तो Valorant community, I have a request. Just buff Sage, no? क्योंकि मैं काफी nerf कर दूंगा उस character को. So it's not much of a problem. What about you? You think playing this will shift your gameplay style at least? Yeah, definitely. I used to play controller. I will definitely play Harbor a lot more now. And obviously Indian character है तो अच्छा लगता है ना गेम में भी Indian character खेल रहे. Representation. I is think always this good. Indian character is kind of cool. Like buff Yeah, hair, yeah. it's got cool lines to वो it. ऐसे It's not like nerdy. stereotypical नहीं किया है Exactly, उन्होंने. right? So they have made him really Not nice. just I me. think
Everybody is pretty happy with how he's left it. Okay, cool. So right now we have, I think you explained how Harbor's utilities and his powers are going to come in handy for professional gamers and streamers like you. My question is, for anyone new joining in the Valorant universe who's starting to play, sabka default option currently, let's say, is a Brim because it's easiest to get. Do you think that the Indian gaming community at this point in time, they will immediately opt for it and they should immediately opt for Harbor? Final thoughts on Harbor with the Indian community? I feel कि अभी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में काफ़ी लोगों ने वैलोरेंट से बहुत यूज्ड टू हो चुके हैं. लोगों को पता है कि वैलोरेंट क्या है, बाकी कैरेक्टर्स क्या करता है, और सब लोग आई थिंक सबको बेसिक कैरेक्टर्स खेलना आता ही है. सो हार्बर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाइपर और ब्रीच मैं बोलूँगा, क्योंकि वाइपर के वॉल्स स्मोक्स ऑलमोस्ट सेम है, ब्रीच का इनिशिएटिंग स्टाइल, स्टन करना, साइड कवर करना सेम है. तो आई फील जो लोग ये कैरेक्टर्स खेलते हुए आ रहे हैं उन लोग 110% हार्बर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आपको कॉम्बो दोनों मिल रहा है. जैसे पूरा साइड कवर करता है ब्रिज और वाइपर दोनों कवर करता है, सेम ये भी कवर करता है. प्लस इसमें आपको सामने वाले को स्टन कर सकते हो, रिवील कर सकते हो. थर्ड चीज, आपके स्मोक में आप इनविंसिबल हो यार, आपको गोली नहीं मार सकते. तो बहुत कुछ आपको पर्क्स मिलते हैं एक ही कैरेक्टर में. आई मीन जो जिस टाइप का ऑडियंस बिल्ड हुआ है इंडिया में इस वक्त, सबको पता है कि वैलोरेंट अगर वो लोग खेल रहे हैं तो उनको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी एजेंट हो. आई नो सेज और एक दो कैरेक्टर जो थोड़े सिंपल है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी अदर कैरेक्टर यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू नो अबाउट देम. सबको अभी कम्युनिटी में पता चल चुका है, नए ऑडियंस है जिनके उनको भी पता चल चुका है कि जानना ज़रूरी है उस कैरेक्टर के बारे में. द ओनली थिंग which will motivate them to pick Harbor is it's an Indian character. Oh, nice. हाँ, वो primary है. वो primary, मतलब वो excitement में at least you'll start with it. Yeah, exactly. देसी लौंडा है. Perfect. Then in that case, the same question goes to you. Your community, the Indian gaming community that exists, do you think they're gonna go in for Harbor? Definitely, and वो तो फर्स्ट चीज़ ये है कि इंडियन कैरेक्टर है एंड हम इंडियन से तो हम ऑब्वियसली चूज करेंगे. एंड उसके अलावा लाइक I mean, his abilities are pretty simple as well. Like whoever picks up the games also for like a new player, they know कि I have a wall which can block view. So I know कि यहाँ से enemies आ सकते हैं, wall डाल दो उधर. यहाँ पे कोई plant कर रहा है, उसको smoke कर दो, he can plant safely. So I feel like he's pretty beginner friendly character. All-rounded character. Yeah. New agent that's coming. Easy to start, tough to master, ऐसा कुछ. Oh, beautiful poetry. That is the proverb, right? It is. From Proverbs, Raka, what do you think? आई थिंक द बेस्ट पार्ट एबिलिटीज़ वगैरह का तो सारा हो गया कि प्ले स्टाइल, बट हार्बर के लॉन्च से थोड़ा इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिलेगा कि इंडिया में भी सीन है, वैलोरेंट का सीन है, देयर इज ई-स्पोर्ट, देयर आर स्ट्रीमर्स, तो वो भी प्ले प्लस पॉइंट है हमारी कम्युनिटी के लिए. Perfect. You heard it from the professionals here. Of course, the Indian gaming community is going to be very excited to play Harbor. We've got a lot more things coming up. Back to you, whoever is on stage. Even though I am pretty sure that I am the number one gamer in this country, there is one man who makes me feel like maybe he is in contention to be the number one gamer here. यार, उज्जवल, aka Techno Gamers. इतने सब्सक्राइबर कैसे? प्लीज समझाओ. शायद ये वाला क्वेश्चन हमने ये पूछा तो हर बार मैं यही पूछता हूँ. सारे खरीदे जाते हैं. सारे मैं ऐसे टॉप पे नहीं बैठा हूँ, ये सब खरीदा है. Welcome Ujjwal. You play so many games. Every game that exists, you've played it. What makes Valorant so special? क्योंकि ये एक नया ही कॉन्सेप्ट है. मतलब जैसे शूटिंग गेम्स तो चलते आ रहे हैं, बट ये ऐसा लगता है कि शूटिंग गेम में जो एबिलिटीज़ कैरेक्टर में मिक्स हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ है. और इसीलिए मैं भी वैलोरेंट में खेलने आया था, क्योंकि एक रिपीट होता चला गया था हर गेम में. तो मेरे हिसाब से ये स्पेशल बनाता है, और जो कॉम्पिटिटिव और जो लोगों में क्रेज़ है इस गेम का, नेक्स्ट लेवल. And what did you think about our new agent's trailer? Harbor का ट्रेलर, did you what do you think about it? मैं पहली चीज़ तो जो इंडिया में ट्रेलर बना है ना, वो पूरी जो इंडियन वाइब आ रही है ट्रेलर में, वो बहुत प्यारी है. मतलब बहुत ही कम गेम्स ऐसा करती हैं बड़े लेवल पे जाने के बाद, तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल है. और सबसे सही चीज़, कैरेक्टर का नाम तक वरुण है और कैरेक्टर इंडियन है. करेक्ट. तो पहली चीज़ तो ये बहुत बड़ी बात है अपनी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए. और कैरेक्टर की अगर बात करें तो लुक भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि आएगी खतरनाक, जो कि आई है. तो मतलब मस्त है. Little Ranveer Singh vibes he gives, no? हाँ, थोड़ी डेंजरस वाइब है, चैम्बर टाइप, और वही चाहिए थी. Did you hear the voice lines? एक दो voice lines are like, यार Phoenix, come, let's do it. हाँ, वो चीज़ सही है. गेम जब स्टार्ट होता है ना, तो लाइन्स आती है जेट वगैरह की सबकी, और उसके बीच में ये लाइन आएगी, नेक्स्ट लेवल. एक जब when he kills someone, he says चल हट. सही में ऐसा है. There's a voice line that says चल हट.
Next level. How does that make you feel? Like, how do you think Indian fans will react to Harbour being so desi, you know? Like, do you think they'll feel good about it? What does it feel like? बहुत मतलब लाइव स्ट्रीम वगैरह में बहुत मजा आएगा ये सब सुनने में. मतलब अगर कोई भी कैरेक्टर, पता है मैं एक गेम थी उसमें हिंदी जब भी आता है ना किसी ऐसी गेम में जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे है, तो वो तो मतलब बाहर के लोग भी खेलेंगे, उनको भी पता चलेगा ये नया वर्ड. सही है. And as far as your comp goes in the team, do you think people will start picking Harbour over Viper? देखो मेरे को तो ऐसा लगता है कि बस बंदा अच्छा होना चाहिए. एजेंट सारे ही तगड़े हैं. हाँ ये हो सकता है कि थोड़ी ब्रिम की बैंड बजे, वो फायर वाला और ये पानी वाला, तो यहाँ कंपटीशन है. Well, Ujjwal certainly seems to have his opinion set on Harbour. We'll have to see कि मैदान जंग में कैसा performance रहता है. As you guys know, we have a very special exhibition match, and to tell you guys more, over to my co-host Mamba. Take it away. I'm sure you're all excited to see Harbour in action, and today you're going to get your chance because we have a killer show match planned for all of you folks out there. We'll have two teams, Team Alpha and Team Omega, who are going to go up against each other. We have experienced players, popular influencers. Who's going to win? There's only one way to find out, and that we'll find out when the time comes. But make sure all of you folks go out there, show some love to your favorite players. I want all of you to go to the official Twitter handle of Valorant India and South Asia at PlayValorantSA. Go out there and vote for your favorite teams and make sure your favorite players feel the love. Hey everyone, this is Ocean and I'm here with Jemlo, Head of Communications and Channels for Asia Pacific, and Ashish Gupta, Marketing Lead for India and South Asia from Riot Games. First things first, how are you guys doing today? So excited to be here. Thank you for having us. Thank you for coming here. We're all excited for today. I mean, definitely, it is going to be an incredible one today as we are launching our newest agent, our Agent 21, coming up all the way from India. So, Jem, the first question is for you. How is Riot seeing this as an opportunity to connect with the Indian and the global market overall? So, how is it? As you said, we've gone through 21 agents. Finally, we have one for India. So excited to be here to launch Harbour, which is Valorant's very first Indian agent. Harbour is a great way for us to connect with the Indian gaming community here. We know that just Indian gamers, they're so passionate. They are amongst the world's biggest communities. Harbour is a way for us to really reach out and connect with the players here directly. Yeah, and this launch comes at great timing. Riot earlier this year announced that we were expanding from Southeast Asia to Asia Pacific. So folding in India is one of our biggest new markets. So Ashish here has been hard at work setting up his team and office here in India, but you can expect to see more and more activities for the Indian market. And now, coming back to you, Ashish, the rock star behind everything that there has happened in a little while, I mean, with the new agent and all. So I want to ask you, how does Riot sees it as an opportunity to connect with the Indian players, Indian fans, Indian community, just like Jem just, told us about right now, the very passionate ones. So how do you and the entire team sees it as an opportunity? Ocean, first of all, the real rockstar is about to be launched today. I'm not the rockstar. Second part of your question is, I understand. So what I'm saying, when we were developing this, all right, and we took actually a leaf out of Indian cinema and film and music, and we wanted to put all the essence, flavor into the Harbour. And this is the result of whole community who played our game last 2 years. The casters, the players, the pro players, the teams, influencers, right? Let's not forget anyone. And because of them, it's all happening. And when you see the trailer, when you see Harbour, you will see those essence what I'm talking about. Yeah. And I think every player can see the reflection in him, and that's our motto. Yeah, that is true. That is true. But when will we see something else as well? If there are something about the future plans or anything, if you could just, just maybe shed some light on it. Maybe coming here. All right, well, that's just, sounds really good. Just, upcoming years are going to be really, really good for Valorant in our country and definitely Valorant all over the world. So we're going to be looking forward to the launch of this agent Harbour right now. So one fantastic, fantabulous, amazing, incredible agent just is on the way. So we'll see you guys on the other side. Bring the realm to reality.
Hello! Hello, hello, hello! What's happening? Alright, everyone, settle in, settle in! Welcome to the first ever Riot Games community event in India! Give me a round of applause, come on! My name is Tanmay. And I'm Abhish, and we are here beyond excited to have you here for the introduction of the newest agent to join the Valorant protocol. Are we excited? As we all know, Riot Games has created a large cast of agents in Valorant from the start. There are agents from Brazil, Korea, the Philippines, Turkey and more. Really, the whole world over. And this is a big day for all of us. Valorant fans in India, as for the first time, we have an agent from our own backyard. He'll be the first Indian agent to join the Valorant protocol, Varun Batra, better known as Agent Harbour. He's strong, he's fast, and he gets the job done no matter what the odds. You know, Tanmay, I have a question. I think when the trailer came out, I kind of got to know a little bit about the backstory, got to know about the player's abilities. But for the people at home, if you have not seen it so far, this is what we got to see. It's been a long day. Okay, a long couple of months. Relic secured. I've never seen anything like it. We had found plenty of ancient things in our line of work. But this was different. And he knew it. Sorry, Varun, but I'm gonna need that. Just give me the artifact and you can go back to being the commander's errand boy. I won't ask again. Agent Batra has gone rogue. Find the bastard! Now, instead of artifacts, Realm hunts me. Luckily, I have it under control. You're late. Yeah, and you're heavy. Welcome to Valorant. Shut up.
Hey, everyone, did you enjoy that trailer? Definitely. Looks like, from the looks of it, this agent is definitely going to make waves in the game, I believe. Yeah, dude, he was fantastic. That was quite an action-packed trailer. I mean, I'm itching to play Harbor. He's clearly a man who can keep his cool under pressure. Yeah. I mean, and as a controller who keeps his team safe, the smoker can actually clear the field with a single wave of his bracelet-bound hand. So that's amazing. Yeah. Look, Harbor looks like he's a man you can count on. He's like the Dhoni of agents, right? Keeping cool under pressure, which is really the only kind of player you want on your team, right? I mean, definitely, because Harbor gets his powers from an ancient Radiant artifact, a bracelet and a set of rings. The bracelet unleashes a force of water and the rings control its temperature and movement. So together they actually give him infinite power to actually just, get that control over the elements. So, let's see how it just, has that control on the battlefield. So here you guys go. This is the public service announcement from Mumbai to the rest of the world. I am a Raja. Love it. Love it. Love the part where he wins the round and then looks at the other agents and says, "Nahi ho raha hai kya?" I love that voice line. Big fan. That was awesome, and I want to give a huge shout out to an Indian CGI artist, ATO3, who helped create the gameplay video. Please, round of applause for him. Looks awesome. And I'm one of the top players in the region. I can't wait to play Harbor and explore what I can do with him. I mean, with me at the helm of it, possibilities are endless, Social. I mean, they truly are endless, and I am gonna use them to kick your. We'll definitely talk about that when Listen, we play there's next a greater chance of Harbor coming to life and showing up amongst all of us than you kicking my anything. All right? Now that you've mentioned it, I mean, let's actually give people what they want. So, yeah.
Oh man! है ना? क्या बात है? Are you sure you're not standing on stilts or is this your original height, Harbour? Original height. Alright, how about you take this? Once again, please give a huge round of applause how incredible Ankit is looking. Yeah. Thank you. Also, ladies and gentlemen, others, this is the first time a person is ever cosplaying as Harbour. Once again, Ankit, this looks incredible, dude. Thank you so much. Yeah. अंकित मैं सुबह से नहाया नहीं है थोड़ा No, I'm just kidding. Alright, Ankit, do you think you can do a few Harbour lines also? क्यों नहीं? Not bad. क्यों नहीं? Okay, height पे fight होगी, कोई नहीं. Tell us, how do you feel about fighting for the Valorant protocol? Conflict is not my first choice, but that choice was made. Oh, poetic. Oh, wow. Poetic. सर दिल को छू लिया सर क्या बात कही आपने. But you know, we saw what happened with Realm. You were running away, and you know Realm is going to be chasing you. Now you get to play Valorant as Harbour. You know, how does that feel? I've done 1,000 missions like this before. Today is no different. अरे बाप रे. Arre. काफी inspiring. Well said. काफी Irshad. confidence. Irshad. It's been great speaking to you, Ankit. And now, if you want to find out about the origin story, where Harbour was born, the team behind it, who are the people to make it happen, what is the backstory to his story, shall we find out? Right. Chalo, let's see some excitement. Woo! After you over there, Harbour sir. Alvida. All right, guys, that was Ankit making Harbour come to life. Can we? Yes. Took a village to make that happen. You know, I've been playing Valorant for a while, and there are a lot of great characters already, but I'm still very excited about Harbour coming in. It's clear that Riot Games has worked really hard to make Harbour a character that Indian players especially can relate to. And who better to tell us about how they did that than the marketing lead of Riot Games in India, Mr. Ashish Gupta. Please, can we have him up on stage to tell us all about it? Ashish. Welcome. Can we get Ashish? Do you need a mic? I believe you'll need a mic. We're just going to share it. Ashish, I'm a big fan of the Valorant universe. You know, as a superior gamer myself, I love all the agents. You know, they're mind blowing and so real. Like, how does Riot keep doing this time after time? How do you keep things so authentic and real? In order to create any agent at Riot, we believe in authentic representation. That's most important factor we have. Our developers, the teams across gameplay design, the character design, everyone work together in collaboration. And we hope that every player could see some reflection of them in Harbour. Finger crossed. All right, I want to know, where did the idea come from? What is the process like? Tell us the origins of when Riot decided that they want to do an Indian agent. Okay. Question of why was never there, it's always when. You're right that. So we began by working with lots of Indian consultants who were giving us lots of gyan, lots of knowledge about our culture, tradition, about what we like, dislike, food, drinks, media, lots of other things. And the basic goal was to give enough material to our developers and the team so they get immersed and inspired by authentic Indian culture. Yeah, and that hard work is clearly visible, right? Like in the voice lines and just the small touches, the backstories. A lot of work must have gone behind it. Yes, thank you. They pointed out details. Our developers also worked very closely with our team in Asia Pacific to ensure that the interpretations and their representation hit the mark. They work with Indian writers like me, including myself. We were deeply involved in shaping Harbour's voice, demeanor, and use of Hindi. Yeah, I love that. After he gets a kill, Harbour's like, "Chal hut." तब मेरे दिल को छू जाता है. और जब leak हुआ था when you were just teasing Harbour. I love that there was a samosa and a cutting chai
in it, which really shows your hard work. Thank you so much, Ashish, for all the hard work. Please give it up for Ashish once again, guys. Please. Thank you so much. Thank you. And of course, the night wouldn't be complete if we didn't hear from the developers at Riot who made Harbor. So let's have a word with the developers on Agent 21. Hey Indian Val community, I'm Alexander Miskitas and I was one of the agent designers on Harbor. Hi everyone, I'm John Gosnicki, character producer on Valorant. Hello my friends, my name is Ryan Clements. I am a senior narrative writer at Riot Games and I was the point writer on Harbor. I am so happy to be joining all of you today. We're really excited today to share with you the launch and reveal of Harbor. At the high level, when we were getting started with Harbor, we were thinking about what are the opportunities to expand our controller roster. And the one we got really excited about was giving some competition to Viper on maps when Viper is really popular. There are some kinds of maps that lend better to wall smokes versus dome smokes, and we wanted to spice up the mix on the wall smoke side of things. And by having more creative expression with wall smokes, you can make a really interesting and compelling agent. And we decided to kind of run down that idea and try to make a controller that could kind of be more creative and on the fly and in world with how they kind of approach their round with helping their team execute on a site. You can do a lot of really fun things with Harbor in terms of how you control their reactivations and their bendings to create really unique situations for enemies to have to respond to, and hopefully create an advantage where you can plant the spike or otherwise create a good outcome for your team. Another thing that I'm really excited for players to dig into is how they want to combo Reckoning, Harbor's ult, with other pieces of the agent arsenal together to make strategies. It is a really interesting ultimate in that it gives a form of softer recon advantage where you can learn where enemies are, you can potentially debuff them, but it's really up to you synergizing with your controller on your team to make that into a full-featured kind of opportunity. And I'm really excited to see how creative and synergistic the combos are going to be with that. Really early in Harbor's process, we talked a lot about the idea of an adventurer, someone who adventures. We wanted someone that had an altruistic mission, not one of greed, glory, and power, but someone that really cared about the realm of antiquity, preserving it, protecting it, and celebrating it. And I always talked about Harbor as a character as someone whose power was unasked for and unwanted, but it was still nonetheless thrust upon him, and he had to use it to the best of his ability. Because we wanted to embrace the heroes of Indian tradition. They are not just warriors in literature and in myth. These are scholars, poets, lovers, dancers, philosophers, ascetics. These are not one-note heroes. They are not like Western action heroes. They are so much more than that. And that is what we wanted to celebrate and honor with our work on Harbor. When we started working on Harbor, we always knew that we wanted to make an Indian agent within Valorant, and it was more a matter of when, not if. And so when Harbor came along, it felt like the right time for a variety of reasons. And so the team, as we do for many characters, went really, really deep on gathering inspiration, reference, research. So we watched a ton of movies, specifically a bunch of action movies. Looked at books, media, music. We hired a consultant, talked to Indian writers, and really tried to gather as much reference and information around what would make an aspirational character within Valorant. We worked with a circle of South Asian rioters that have lived experience and have passion and have a connection to India or a place in India, and that is something that they can guide us in language and incorporating Hindi into Harbor's script, or telling us, yo, you messed up on your cricket bat, that does not look like a cricket bat, please fix it right away, everyone will know. These are all very important things for us, and we worked very hard to make sure that we could honor the Indian Valorant community, both in India and also around the world.
I hope you all enjoyed all these little tidbits. Again, thank you so much for playing Valorant. Thank you for embracing Harbor. We love hearing your feedback. I am so honored to participate in this process. I'm so happy to share Harbor with all of you. I would also love to wish everyone in the Indian Valorant community a happy Diwali. I'm really excited for y'all to jump into Valorant and let us know what you think about Harbor, and hopefully you really enjoy them. Happy Diwali to everyone. The timing of the festival couldn't have been better to coincide so closely with the launch of Harbor and him joining the Valorant roster. I hope you're all enjoying him, finding all the different ways you can cut up the map, protect your team. It's really exciting to see what y'all are coming up with, and excited to see how he evolves in the future. And I hope y'all have a happy Diwali. Thank you so much, and we will see you in game. Cheers. Yeah, that's a lot of work that the team has put in on creating the first Indian agent, Agent 21 for us. And to show them your support, next time you are in your lobby, everyone insta-lock Harbor. ठीक है? Chokadi on Brimstone, Chokadi on Omen, Chokadi on Viper. Raka, I'm watching you, all right? Please go and pick Harbor as your controller and let us know how it goes. I mean, even though I'm not as a controller main, but still I'm tempted to use Harper maybe once or twice. I'm thinking about it. Yeah, I'm personally a duelist. I believe you. KD maintain करने के लिए you just need that many kills, Yeah, sure. But even I think even I'll give Harbor a try for sure. For sure. There's so much pain in my voice right now. But still, till then, if you want to see just how much difference you can make onto the game with Harbor as an agent, so stay put. We have just got up a match lined up just for you guys to just, see what this Indian agent of ours can do actually. Yeah, that's true. Team Alpha and Team Omega are going to have an epic showdown with Harbor as the controller for both teams. Get set to watch some of India's best content creators and Valorant athletes as they show off their skills. Oh, best content. Shouldn't we have been in on this? We should have. I don't know. कुछ तो prompter था कुछ गलत है क्या? We'll find out what happened. Anyway, meanwhile, you guys can go find out what folks in the Valorant esports community think about the upcoming inclusion of Harbor. Let's go check. Best बोला है तो definitely check it out. Hi everyone, this is Sukamal here with Bamba, and we are talking to some of the most remarkable people behind South Asian Valorant esports. Right? We have Rushi from Global Esports, we have Aryaman from Enigma Gaming, and we have Manoj from the OG Velocity Gaming. Thank you guys for joining us here, and we have some questions for you and hope that you will have fun at the event as well. Thank you so much. Rushi, I just want to start off with you. Of course, there's been a lot of attention around you and the team. First of all, congratulations to you on the Pacific League slot. But I wanted to ask a question that I've been holding on. Of course, the community also wants to know, especially with the launch of Harbor and your captain, your IGL, also happens to be a controller main. Do you believe Harbor is going to motivate players to pick controllers more, or at least focus on them a little bit? Because everybody wants to be that flashy player, but support roles are not that easy to come by. So first of all, thank you so much. I'm really glad that we were able to showcase what was required to get into the partnership program with Valorant, and Riot has been really great in helping us through every step of the way. And I'm glad your question wasn't about our roster, because that's usually what everyone has been asking us. But as you said, it wasn't a happy coincidence. We did intentionally pick Aaron for the role because we had an opportunity to get only one import. So we did want someone who was a controller, who was an IGL, who would be able to bring everything from another region into Asia. So that was intentional. You are going to be seeing a lot of Harbor in this I can leak. We are going to be seeing a lot of Harbor in Global Esports' primary roster. I think it's a really important aspect because the controller has released after a year. So the meta has completely changed, and I played Harbor in the pre-release and it's amazing. So I'm waiting to see all the action come out from Harbor. That is awesome. So now coming to you, the OG of Valorant esports in South Asia, Manoj. Tell us a little bit about how does this Harbor launch mean to you, both as a player as well as the owner of Tier 1 esports org, right? Have you been happy, are you happy with the investments that you have made in esports in South Asia so far, and where do you see this taking us to the next level now? Thank you so much, Sukamal. Firstly, I would like to thank Riot for this.
Honestly, very happy with how Riot is progressing towards our region. The kind of things that they have done for us, or the opportunities that they have given us, is very forthcoming compared to all the other esports titles that we had. The kind of ecosystem that we believe in is what Riot is also believing in the same. So that kind of synergy is what is needed for a common growth. And to me, my investment makes more sense now because it's a combined effort from everyone. It's just not from one side. And coming to Harbor, really happy to have played that agent as well. The first time for me to play a controller agent because I'm usually an initiated duelist. But totally loved him. The title song has been my soundtrack from the day of release. So really happy and looking forward to 2023 and all the challenges that await us over there. That is so refreshing to hear. And yes, we are as excited as you, to listen to that banging number outplayed on stage as well. So yeah, coming to you, Aryaman, Enigma Gaming. Always known to give opportunities to players and making stars out of them, right? And we have seen that in the form of Antidote and Excali as well, right? So what is the strategy now? Where do you think the next big Enigma Gaming star is going to come out from? Is it going to be one of the big cities, or are you going to be focusing on looking at talent that has probably not seen enough opportunities in smaller towns? Where are you going to find the next Enigma Gaming star for Valorant South Asia esports? So firstly, thank you so much for having me here. To answer your question, I don't think we look at any particular area or any particular town or city where we're looking to find our players. Our team is very diverse right now as well. We have, Antidote from Calcutta, we have Raw Fuel from Goa, we have Excali from Maharashtra, we have RVK who, comes from the south. We have Tesseract who's from Philippines. I think Riot has done a phenomenal job and the third-party tournament organizers in India have done a phenomenal job in creating so many IPs here and having so many tournaments that people in every region and every city and every smaller town in this country have had an opportunity to kind of showcase their talent and be recognized, which is why we're seeing so many new players coming up right now. There's I think Manoj is a new signing as well in his team. It's becoming easier and easier to recognize new talent. So we don't look at any particular region. We're seeing all these tournaments which are happening on a very regular basis, and we're looking for whoever's performing the best over there and looking to give everyone an opportunity. And I think so far we've seen that they come from very diverse parts of the country and all over. So that's amazing to see. No, that's wonderful. But I have a question for all of you, by the way. Aryaman, you can start off with this, right? In the last 2 years, you've seen Valorant become millions of players globally and worldwide, especially with the entry barrier being so low. Everyone's been enjoying the game. But how do you foresee the growth of Valorant in the country right now? By the way, your roster, I didn't ask you about that because I already know. So I think, Harbor is probably the best thing that could happen to Valorant in South Asia and especially in India. Now having an agent from here, I think that the connection with the Indian audience is going to be a lot deeper. I'm very optimistic that it's going to get a lot more players in this country. Having a fantastic event right now that's going to be broadcasted for all the athletes. Riot manages the community so well. I'm very, very optimistic that it's going to continue to grow. That Valorant is going to continue to grow drastically. Even with the Ascension coming up next year, all the rosters working hard towards making South Asia proud on that international stage. I think there's a lot more to come in store, and Harbor is going to be a big boost for Valorant in the region. 2 years back when I first started Velocity Gaming, we started out only with Valorant. The main reason it being Riot Games. Because I have been following esports for a long time. I've seen Counter-Strike and the entire community that is, Counter-Strike. I come from that community. The kind of struggles we have faced over there in terms of information, in terms of connectivity, in terms of availability of resources. I've seen League, which again comes from Riot titles. So the kind of opportunities that athletes had over there compared to this, it actually forced me to say that this is what I need to get into. This is what is going to be the next big thing. And I'm very glad that we have come to a level where now an agent is from India. And, the voice lines are going to be in Indian voice lines. The song is an Hindi song. It comes from it comes from the city of Mumbai, where we are in right now. So I'm super happy to have made that call back then and kind of results that I have got, 2 years down the line. So thank you, Riot, for all of that.
Oh wow, you guys stole everything I wanted to say. But no, I really, as he said, I would just like to chime on with that. I'm really glad that we took the bet that we did on Valorant 2 years ago when it came out. In fact, while it was in closed beta, going all in. Initially, we weren't very sure. A lot of people did tell us that why do you want to put all your eggs into one basket? And that's when we realized if we are going to put our eggs into one basket, it should be in a title that comes from Riot Games, because they have a legacy of building titles that are stable and we know are going to do great, which is why what we saw with League of Legends now we knew would be replicated with an FPS title. That's why Valorant, we were sure that we were going all in, and the past 2 years have really paid off and it's been amazing. To the point that now we have an agent that's coming out from India. So having an Indian agent in game and having that South Asia representation is absolutely brilliant. And as we were discussing off camera earlier, I think this is probably the biggest launch of any individual agent across any title. I mean, this is, I don't think anyone has gone above and beyond like this, right with the music, to the tease, to the entire build-up of this agent coming out. It's been absolutely phenomenal. So I think it's going to be a massive boost to the entire ecosystem. And I see Valorant becoming not just the biggest PC game, but the biggest game in the world. Especially when you have 10 players in a roster, yeah, sure. But bottom line is, you guys have been wonderful. You guys have been really nice to us. We have Chan Samosa waiting for you in the true sense of Harbour, in its truest form. But regardless, thank you so much for joining with us. But without any further ado, let's hop into the match and see the first ever teams to play Harbour in Valorant. What is up, people? You guys need to be louder. I can't bear with this. No. What is up, people? I'm not quite sure because I don't have feedback. I'm not quite sure the mics works, but regardless, Ocean, the energy is always up there. There's no doubt about that. Everybody's right here. How are you feeling about this? Because every time you walk up on the stage, you see all the gamers sitting out there in the crowd. And of course, on a special occasion like this, it always feels good. I mean, this is where it just, comes down. If you do a Google survey search, and that would be just, calling up of the best crowd that there can be amongst gamers. This is the best crowd because these people play the games, they live for the games, they like to go for the games, and that's why this is the best one that there can be. And because of their energy, I'm super pumped up as well. So, yeah. Look, man, the energy is going to be through the roof. There's no doubt about that. But now, ladies and gentlemen, it's time to call upon the teams on the stage. Give it up for Team Alpha and Team Omega. So here with Team Alpha and Team Omega, and both these teams are looking absolutely solid right now. Primed to win, primed for success. But I can't decide that. I'm sure the audience can though. Ladies and gentlemen, for the first team, can we hear it for Team Alpha? Loud. I don't think so. I believe we can do better for Team Omega. Come on, guys! That's loud. I see you, bum. You trader. But nonetheless, ladies and gentlemen, of course, it's going to be an exciting game. But I have to say this. It's going to be firecrackers all around, no doubt about that. But here's the first question, right? Have you guys decided who's going to play Harbour? Yeah, obviously the best player in our team. Who's going to be the best player, I guess? I'm still looking forward for the answer. Obviously, Anti. I wonder, I know that's why I was looking down the lane. I was like, sure, Anti, I'll come to you as well. But Ocean, who do you think was going to play Harbour over there? I'm going to be asking them. What do you think? So if we're talking about the best player playing Harbour, it's going to be, of course, the best player in India. It's SK Rossi playing Harbour for Team Alpha today. And yeah, we're just going to crush it. But here's the thing. You can play Harbour all you want, but the audience poll clearly in their favor, which is rather unfortunate for you. But do you think that adds pressure to you? No. Not at all. That's a very, very, very simple answer, Ocean. But what do you think about this team? I believe this team is going to be really, really good. But my question actually comes down to them is how excited are you guys to be playing Harbour for the first time in the world? Anyone? I mean, it's definitely me, right? I'll be playing Harbour, so it's pretty exciting for me because I never played any controller. I'm a duelist main. So, I dig in some stuff and I tried to
learn, and because I have to showcase Harbour today for everyone. So I did my homework, and let's hope for the best. And I feel great. Snacks, but I have to ask you, you've always been very cheeky whenever you played with the players on the stage or against them. You've always been super cheeky, but do you have any special strats with Harbour on the team? Anti, completely. You do realize he's supposed to be the support player, right? If he's playing also Harbour. the fragger. He's the best player in the team. Of course, he's gonna score. So I'll give him the full backup, and I think my Jet gonna top frag and diff the other team's Jet. The way all of this is being portrayed is making me lose faith. Okay, I was No, choosing your side, but it's making me lose faith, man. You know, I mean, I have a question, like a similar question. Like, you guys just formed this team right now. So, any good tricks, any tips up your sleeve, or anything up your sleeve right now? Well, SK Rossi told me that he's been studying a lot of strategies. Like while on the way here to the event, he's watched a lot of videos and he's come up with something, right? And we'll show that in game. He's just doing this, and so yeah, that just makes more sense. Oh, absolutely. You know, I'd ask you who's the player you want to look out for on the other team, but I think the answer is pretty obvious. But apart from, is there any other player you're looking out for? No, I think it's Ankita because she has the 100% record of winning LAN. So I need to be, a bit. I'm worried about her. So 100%, she can clap even when she's paranoid. I've seen her play like that, so I agree with that 100%. But Ocean, I think the clock's ticking. Of course, the match we've all been waiting for. But what do you think about what Andy just said? Ankita having a 100% LAN record. Let's actually, ask them, because LAN is always not without any trash talks, right? So let's ask them if you have any message to give to your rival team or anyone. Like starting from Ankita, maybe if we just go down to this way. बाद में मिलना है अंकिता संभाल के. No, all I'll say is that I just want to make it a 4-time LAN champion thing now, so watch out. I'll try my best for not to make it her 4 times. Just kidding. You know, I have to say this, Andy. You and Rossi have been playing against each other for quite a while now. You played so many LANs. Who do you think is going to dominate today? I think it's me. Because I play a lot of controller agent now. So I think it's me. You know, that's the other way of saying Umar ho gayi hai. No, I think it's both of us, we don't have a lot of experience about playing show matches. I think it's a different ball game. It's not a competitive game. Idhar kya hota hai, kuch pata nahi lagta hai. So I think Raka will be sitting beside me and he'll be helping out. Andy bhai, idhar re-strat kaam nahi karega. Thoda dusra kuch karna padta hai. So I am excited to play, and thank you so much Riot and Valorant South Asia to host such event, and it helps us as a pro player. We love to play some fun events and have fun. Thank you so much. Definitely looks like Andy's like, game chalu karo, but no, I have a lot more questions for all of you folks. Scott, I'm going to ask you, Mortal. I need you to answer this as well. You guys are great friends outside the game. Game के अंदर आज भूल के खेलने वालों की याद रखें कि नहीं, आज दोस्त से ज़्यादा नहीं मारना है. गेम में हम कभी दोस्त थे ही नहीं. Ooh, I like this. Mortal, what do you think? What do you have to say? भाई रिकॉर्ड में जाके देख लो, यही बोलूँगा और क्या. That was quite insane, Ocean. I have to hand it to you, bhai. तुम बताओ क्या लगता है? Because he has a point though. He has a point. तापमान बढ़ गया मेरे दोस्त. तापमान बढ़ गया है यहाँ पे. The temperature is definitely rising. But jokes apart from all these things, I believe Raka and Hydra are the ones that I'm going to be just picking up right now. Like, you guys are friends, know each other बहुत पहले से. So do you think it's going to be a disadvantage playing against each other? Like, एक दूसरे को जानते हो mentally? I'm just gonna say good luck, Raka. That's it. हमने पहले डिसाइड कर लिया that एक knife हमारा it's decided. हम लोग अभी बीच में बात कर रहे थे. If it's a 1v1, we're just gonna go for the knife. Yes. I would love that. I would love that. I guess only time can tell us what's going to happen. But Zaya, Ankita, I have one question for the two of you each. Have you guys ever played on the same team? Ever? Unfortunately, no. Never. You've always been pitted against each other. Yeah, in LAN games, always against each other. I don't know why, yaar. I want to play with Ankita. Can I switch? Is it switch karna? Look, remember, you're in the opposite team. You're not supposed to team up. Yes. Why do I have a feeling Sorry. Ankita's probably going to team up? She doesn't have a mic. I'll have to walk all the way there. Why do I feel like you're going to team up? Well, we're not going to make it obvious. We're not teaming up. It's not happening. Acha, 100%, yeah, because I know there are 3 teleprompters that, of course, scripted nahi hai ye.
But the point being, of course, it's going to be an exciting match. There's no doubt about that. But Roshan, I think I'll let you do the honors with this one. Well, now we have both the teams right up here, and I believe I would just wish both of you all the very best, like all 10 of you all the very best. May the best team win out on this one. Maybe we'll have a 4-time LAN champion, or maybe that's going to be just dethroned today. So, ladies and boys and girls, this is the show time. So it's time to play. Give him a big round of applause right now. Of course, all the players can go get settled in, and we'll see you guys in the match. But once again, folks, I need you guys to blow the goddamn roof off. Can I hear some noise? That's more like it. Thank you so much, and we'll see you guys in the game. हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का टेम्पेस्ट इन्विटेशनल में। मेरा नाम है दिशान के मेजी और मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे को कास्टर इस वक्त रहेंगे क्रैकी। बहुत बहुत धन्यवाद मेजी। बट आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टीम अल्फा और ओमेगा के बीच की ये टक्कर। भाई मज़ा आने वाला है। बड़े दिनों बाद हमको कुछ ऐसे मैचेस क्रेजी देखने को मिलेंगे एंड इट्स गोना बी हार्बर वर्सेस हार्बर एक दूसरे की तरफ। वो सबसे ज्यादा मजा आना है। देखिए सबको पता है वो चीज की पहले कहीं और वो मुकाबला चलता था। पहले हम जेट वर्सेस जेट की बात किया करते थे, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हार्बर वर्सेस हार्बर का जो मुकाबला होगा वो हम विटनेस करने वाले हैं। बट बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। आप बात कर लें, यहाँ पे हम हाइड्रा फ्लिक की बात कर रहे थे, जिस तरीके से वो खेलते हैं अपने स्ट्रीम्स पे। यहाँ देखना वो कैसे खेलेंगे। अंकिता सी ने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है एंटीडोट। उन्होंने कहा है कि भाई 4 बार लैंड्स में वो जीत चुके हैं, 4थी बार हो सकता है, देखना है जी। उन्होंने एक बार के लिए मना जरूर किया, बट मुझे लगता है कि एसके रॉसी, अगर मैं कहूँ 4K रॉसी, तो गलत तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर आज के दिन जीत गए तो 4K रॉसी का नाम हम और भी कह ही रहे हैं, बट साथ साथ 4 बार लैंड चैंपियन बन जाएंगे अंकिता। सो मज़ा तो आएगा, बट मेन मज़ा आने वाला है कि हार्बर किस तरीके से यहाँ पे प्लेयर्स खेलेंगे। ऑलरेडी भाई प्रिपरेशन शुरू है रॉसी की और बाकी लोग तैयार है नहीं है। देखिए रास्ते में आते आते उन्होंने जितना प्रिपेयर करा है, जो भी स्ट्रेटेजीज उनको बनानी थी, वीडियोस ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा देखी होगी। एसके रॉसी ने वीडियोस देखी होगी, गेम प्लेज ऑलरेडी वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बट उम्मीद करते हैं कि देखना यह है कि जो टीम्स हैं वो किस तरीके से खेल पाएंगी। एंड टीम अल्फा एंड ओमेगा चार्ट सेक्शन में जरूर चल रहा होगा कि कौन किस पे भारी पड़ सकता है। वैसे आप किसके तरफ हो? देखिए मैं जिसके साथ जाता हूँ वो टीम हारती जरूर है, बट मैं एक बार कहना चाहूंगा टीम अल्फा मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा पसंद है। ओमेगा इज बेटर मेजी, बस ठीक है। अब चार्ट आप भी बता सकते हो अपने, बट ठीक है अब आपकी चॉइस है। बट मेरे को लगता है कि टीम ओमेगा ने जीतने वाली है, बट देखते हैं टीम अल्फा में कौन कौन है और टीम ओमेगा के में कौन कौन है। साथ ही साथ सेटअप किस तरीके से होंगे। एक आधे एजेंट पता है अभी भाई, बाकी एजेंट्स क्या होंगे, मेन सवाल तो वही है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैं कहता हूं कि जैसे हमने इनिशिएटर की बहुत ज़्यादा बात करी है, जो टीम्स थे उन्होंने भी इनिशिएटर की बहुत ज़्यादा बात करी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैप। हमारा जो मैप है वो कौन सा होने वाला है, दर्शकों को बहुत जल्द पता चलेगा। एजेंट सिलेक्शन की आप बात कर ही रहे थे, इनिशिएटर्स की हमने बात करी किस तरीके से कंट्रोलर लिया तो जाएगा ही जाएगा। और उसके साथ साथ हम बात कर रहे थे, चलिए खैर टीम अल्फा की फिलहाल बात करते हैं। अंकिता सी हमें देखने को मिलेगी, टेक्नो गेमर्स जरूर रहेंगे यूजुअल, मॉर्टल उनका साथ देंगे, हाइड्रा फ्लिक एंड एसके रॉसी। वैसे मॉर्टल को हमने हाल फिलहाल में खेलते हुए देखा है और काफी बढ़िया केजे खेल के गए थे, तो मैं मान सकता हूं कि एक बार फिर से मॉर्टल हमें केजे के साथ देखने को मिल जाए। मेरे को लग रहा है ना, लाइक अब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रिवील हो गया यहाँ पे कि रॉसी को भाई खिला रहे हैं वो। हाँ पर उसके साथ मुझे लग रहा है जो डुएलिस्ट का रोल है वो हाइड्रा को मिलने वाला है। उसके साथ अंकिता सी एक कंट्रोलर के रूप में थी, बट अब क्या आने वाला है, वो तो ओमेन यूजुअली ज्यादा नजर आती थी। अब लग रहा है कि उनको भी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, या तो सोआ खेलने की या फिर कोई बढ़िया इनिशिएटर। टेक्नो गेमर्स सेज में क्या खेलने वाले, लाइक उधर हमको मैथ्यू जी की आवाज तो सुनाई दे रही थी कि भाई वो सेज बहुत खेलते हैं, बट टेक्नो गेमर्स क्या खेलते हैं वो पता लगेगा। मॉर्टल केज है, मुझे डाइसी लग रहा है आज कुछ बढ़िया होगा, लाइक फ्लैशी प्लेज आज रॉसी अपने हार्बर से बनाएंगे, तो जेट और रेस से कोई ना कोई तो बनाने वाला है ना। देखिए मॉर्टल का हमेशा कहना रहता है कि मैं टीम का साथ देता हूं, तो अगर वो टीम का साथ दे रहे हैं, और मुझे लगता है जिस तरीके से केजे खेल के उन्होंने टीम्स का बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम का साथ दिया। बट खैर टेक्नो गेमर्स हमने पहले भी सुना है तन्मय को बोलते हुए कि बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, तो एजेंट भी वो कुछ भी खेल सकते हैं। बट खैर टीम ओमेगा की बात करें, जाया, स्नैक्स, स्काउट, राका जोन, एंटीडोट। मैं तो सोचता हूँ स्नैक्स क्या बोलेंगे हर राउंड के बाद, जब जीत रहे होंगे आमने सामने बैठे हुए हैं, और उसके बाद से वो चिल्लाना चालू करेंगे लियो लियो लियो, और बहुत ज्यादा मजा आएगा ये जो बैटल है देखने का। बट एंटीडोट जैसा उन्होंने बोला कि भाई डर लगता है उनको, क्योंकि 100% जीतने का रिकॉर्ड है वहाँ पे अंकिता सी का, क्या पता आज टूट जाए।
क्या पता तोड़ दिया जाए वो। तभी तो मैं ओमेगा के साथ गया हूँ यार, अब खुले चैलेंज आए हैं जी, इसलिए तो आए हैं। अब इस टीम की बात करें, एंटीडोट हार्बर खेलने वाले हैं, सो रॉसी और एंटीडोट एक दूसरे के अगेंस्ट, काफी समय पहले जेट वर्सेस जेट का वो देखने को मिलता था। ओए होए होए, कौन टॉप फ्रैग करेगा आज के दिन, ये एक बड़ा सवाल है। पहले भी रहता था और तब से लेके अब तक चलता आ रहा है। बट बाकी एजेंट्स की बात करें, स्नैक्स क्या खेलने वाले हैं, ओमेन पे नजर आते थे पहले भी, और मैं टीपी का बहुत बड़ा फैन हूँ इनके, जिस तरीके से वो चीकी प्लेस में गलत हो जाता है थोड़ा बहुत कभी कभी, बट ओवरऑल एक अच्छे डिसेंट प्लेयर है। अब उन्होंने बोला सपोर्ट तो देंगे, बट दूसरी तरफ स्काउट एक इनिशिएटर के रोल पे नजर आते थे यूजुअली ब्रीच, बट आज आई थिंक रेड देखने को मिलेगा। सो इट्स टीम अल्फा वर्सेस ओमेगा लेडीज एंड जेंटलमैन, टेम्पेस्ट इन्विटेशनल, एंड ये जो एग्जीबिशन मैच है ये केवल एक होगा। बिल्कुल सबसे अच्छी चीज अगर मैं क्रैकी कहूँ तो मुझे क्या लगा, वो यही लगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने अपने बेस्ट प्लेयर्स पे सारा भार डाल दिया। कहते ठीक है हमारे ये प्लेयर्स हैं, हार्बर ये खेल रहे होंगे, हार्बर वो खेल रहे होंगे, दोनों में भिड़ंत हो रही होगी, हम चार बैठ के देखेंगे कि सपोर्ट कितना ज्यादा बेहतर करना है और कितना ज्यादा और एज अ टीम को आगे लेके जाना। बट राका जोन, आप इनकी बात करें, मुझे पता है कि जब राका जोन मार रहे होंगे तो चैट में क्या चल रहा होगा, ऑडियंस को भी पता है कि वो चैट में क्या स्पैम करने वाले हैं। खेलते बहुत अच्छा है, देखिए स्ट्रीम देखने में जी ये आप चैट की बातें यहाँ अभी फिलहाल ना करें तो बढ़िया, बट प्लेयर मजा आता है। देखिए मजा आता है जब ऑडियंस सपोर्ट करती है अपने स्ट्रीमर्स को और जिस तरीके से वो खेलते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनकी पहचान बन जाती है कि चलिए ठीक है ऐसे प्लेयर्स खेल रहे थे। बट खैर इसी के साथ चलते हैं मैप वीटो की तरफ, और एसेंट को यहाँ पे चुना गया है टीम ओमेगा के द्वारा। टीम अल्फा आपको डिफेंस करती हुई दिखाई देगी। शुरुआत में अगर बड़ी लीड बन गई फिर टेंशन लग रही है मेरे को, बट बाकी मैप्स अगर आप देखें, यहाँ टीम अल्फा ने सबसे पहले बैन किया हेवन, और उसके बाद फ्रैक्चर हुआ उनकी तरफ से एक राइस बॉक्स। बट टीम ओमेगा ने ब्रीज, पर्ल और बाइंड, यानी कि 2 तो नए मैप उन्होंने बैन कर ही दिया। बाइंड भी बैन हो गया, मुझे लगा था बाइंड आ जाएगा यार, बट ऐसा लगता है ऑल टाइम फेवरेट सबका है, खेलना है, पता है बेस्ट ऑफ 1 है, एक मौका मिलेगा तो क्यों ना अपने बेस्ट मैप पे खेला जाए। अब टीम ओमेगा का पिक है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि एसके रॉसी ने बोला तो है वो कुछ तैयारी करके आए, क्या पता बिना बोले छुपे रुस्तम निकले टीम ओमेगा वाले और एसेंट मैच चूज करके कुछ बढ़िया करें। बिल्कुल हो भी सकता है, बट मुझे लगता है कि पर्ल और आइस बॉक्स को ऐसे सब किनारे कर देते हैं, दरकिनार कर दिया था जी, नहीं हम आप में नहीं खेलने वाले। भी बहुत कम एसेंट जिस तरीके से पिक रेट इसका हमें देखने को मिल रहा है, हाल फिलहाल में हम हर इवेंट की बात करते हैं तो एसेंट जिस तरीके से खेलते हुए हमें प्लेयर्स दिखाई देते, मुझे लगता है एक बार फिर से बहुत बढ़िया गेम प्ले हमें दोनों टीम्स के द्वारा देखने को मिलेगा। बट हाँ, आप डिफेंस की बात करते हैं, उसके बाद अटैक जब हम देख रहे होंगे टीम्स को करते हुए, फिलहाल तो टीम ओमेगा अटैक करते हुए हमें दिखाई देगी। देखना यह है कि जो डिफेंस कर रहे होंगे वो कितने राउंड्स अपने हक में निकाल सकते हैं। बट एक चीज तो तय है, क्या पता एक आध जो नाइफ होती है वो भी हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसा फन सेगमेंट हो तो जरूर जाता है। कोशिश करते हैं कि भाई चलो ठीक है एक नाइफ तो कम से कम होना बनता है। यार मेरी आपकी लैंड पे ऐसे उम्मीदें हैं तो मुझे लगता है ठीक है यार, आप ट्रैश करवाने वाले, थोड़ा बहुत करवाने वाले, ट्रैश टॉक होना चाहिए जो है, बट ठीक है जो भी होगा वो तो वक्त बताएगा क्या होने वाला है, कोशिश सबकी रहेगी ये बात है। बट हाँ, अब ओमेगा किस तैयारी के साथ है भाई, इंतजार तो सिर्फ उसका है, बिकॉज रॉसी ने तो बता दिया अपना वो तैयारी करता है, उधर से किसी ने नहीं बताया वो तैयारी के साथ। देखिए जो छुपे रुस्तम होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बढ़िया करके जाते हैं। आप अल्फा की बात करिए, आप ओमेगा की बात कर रहे हैं, मैं अल्फा की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है उनके पास कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जो हमें यहाँ पे एक बढ़िया गेम प्ले देखने को मिलेगा, और जो चीज वो नहीं बोल के गए कम से कम वो गेम में जरूर हमें दिखाते हुए नजर आएंगे। उम्मीद इसी चीज की है, बट यस ऑडियंस भी इंतजार कर रही है उसे एक सिंगल मैच का। और हार्बर जिस तरीके से हमने देखा है उस कैरेक्टर को, और जिस तरीके से कई सारे लोगों ने बोला भी है कि फिलहाल के लिए तो बहुत ज्यादा बफ्ड है, नर्फ करने की जरूरत पड़ने वाली, मॉडल ने वो चीज बोली जरूर है। देखना यह है कि किस तरीके से इस्तेमाल उसका और बढ़िया किया जा सकता है। लोग वाइपर से कंपेयर कर रहे हैं कि ठीक है उससे ज्यादा बढ़िया वो है, क्योंकि जिस तरीके से हाई टाइड को हम देख रहे हैं, वाइपर को हम कहते हैं कि चलिए ठीक है उसका जो वॉल हम स्ट्रेट लाइन में लगा सकते हैं, बट हाई टाइड आप कहीं पे भी घुमा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं ना कि आप फेक कर सकते हो, जो हाई टाइड का इस्तेमाल करके आप यूज कर सकते हो। दैट्स लाइक अगर आपको फेक क्रिएट करना है कभी ब्रीज पे मैप पे खेलते हुए, स्पेशली वाइपर जो ब्रीज मैप पे, दैट्स इनक्रेडिबल। सो 40 सेकेंड आपको रिचार्ज पे मिलने वाला है 40 सेकेंड बाद, और उसके बाद आप प्लेस बना सकते हो। प्लस द मेन पार्ट इज, मेरे को जो सबसे ज्यादा पसंद आई, द अल्टीमेट टेक्निक। वेल हाई अनकॉशन 3 टाइम्स एंड जो भी रैट कॉर्नर्स पकड़ के बैठे हैं प्लेयर्स, ओजी पता है जस्ट गो इन, एंड नियॉन के साथ लाइक इट्स अमेजिंग कॉम्बो। में भी कॉम्बो सोच ही रहा था, और मेरे को लगा कि भाई नियॉन के साथ द रीटेक सिचुएशन, द अपॉर्चुनिटीज जो एक कंट्रोलर यूजुअली प्रोवाइड नहीं कर पाता। सो सी
विद ब्रेम यू डोंट हैव मच ऑप्शंस, आपके पास टिम बीकन है, आप जाइए एज अ कंट्रोलर, बट सबसे ज्यादा बड़ी बात आ जाती है भाई कि अब आपके पास एक रेकनिंग की अल्टीमेट है जो पूरी साइट कवर करने वाली है, हर तरफ प्लेयर कंकास्ट होंगे और आपके लिए एंट्री करना आज रीटेक पे अलग होने वाला है, बिकॉज सिर्फ ओमेन के साथ पैरानोया का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो पाता था। तो आपने जो नियॉन की बात करी मुझे वो सबसे ज्यादा परफेक्ट लगा, जैसे हमने ट्रेलर में भी वो चीज देखी कि किस तरीके से ब्रीच का मैप था और वहां पे हमने नियॉन का इस्तेमाल देखा, बी साइड पे वो लोग रश करके गए, वॉल बनाया और नियॉन तो मैं भागते हुए दिखाई देती है, और वो चीज़ जो आपने बोली भी है मुझे लगता है परफेक्ट कॉम्बो रहेगा। बट देखना ये है कि क्या वो चूज भी करते हैं या फिर अलग कुछ एजेंट्स का कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे। बट ये चीज़ तो पक्की बात है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से खेलने वाले हैं। अंकिता तो फिलहाल के लिए पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि उन्हें जो वो विन स्ट्रीक है ना क्रैकी, वो उन्हें मेंटेन करना है, वो लैंड का उन्हें तोड़ना नहीं है। मॉर्टल एंड नहीं दिलाएंगे यार, बुरा लगा मुझे, बट मजाक कर रहे थे शायद, ऑब्वियसली राइट, मजाक तो था, बट मैं चाहता था कि कह देते भाई मिलने वाला है, चैलेंज होता ना, वो पहले बोला फिर बाद में मना कर दिया। हाँ, हवा में वो चैलेंज वाली फीलिंग आ जाती है। बट चलिए यहाँ प्लेयर्स रेडी हैं, हर एक प्लेयर डेडिकेटेड नजर आ रहा है, पूरा नजर आ रहा है कि भाई आज के दिन अपना बेस्ट देना है इस बेस्ट ऑफ वन। देखिए मैं सोच रहा हूँ कि जब ऑडियंस वॉइस लाइन सुनेगी हार्बर की कितना ज़्यादा मजा आने वाला है। मैं जस्ट थोड़ी देर पहले खेल ही रहा था, जब चलहट की आवाज आई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ना इसी की तो कमी थी पूरे गेम में, और ये चीज हमें देखने को मिली है। मैं तो सोचता हूँ क्रैकी अगर एस के बाद कुछ बढ़िया सा वॉइस लाइन सुनने को मिल गया, जो ऑप्शन में बात कर रहे थे जी नहीं हो रहा क्या, हाँ सामने वाली टीम से बोल दे नहीं हो रहा क्या, फिर और ज्यादा मजे आने वाले हैं। बट खैर जब वो वॉइस लाइन हम लोग सुनेंगे, ऑडियंस सुनेगी तो और ज्यादा बेहतर लगेगा। बट फिलहाल के लिए 4K रॉसी तैयार है, जाया वो भी पूरी तरीके से तैयार, बट एंटी रोड थोड़ी देर के लिए उठे थे, बैठेंगे वापस से गेम में आएंगे, मैच शुरू किया जाएगा। आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या स्कोर लाइन उम्मीद करते हैं इस एसेंट मैच से? यार आप पहले ही मुझे इतने धर्म संकट में डाल दे रहे हो, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, अब जो होगा हमें वक्त बताएगा, मैं कोई प्रेडिक्शंस नहीं देने वाला। कहीं आप फिर मुझे कह दो कि भाई जल्दी खत्म करवा दिया आपने, समझ तो आप गए होंगे। ओके अल्फा आई गेस हाइड्रा फ्लिक को थोड़ी दिक्कतें हो जरूर रही थी, लाइटनिंग एंड बाकी सारी चीज़ें थोड़ी कम की गई है, काफ़ी खुश दिखाई दिए। अभी देखना ये है कि गेम में इनका प्रदर्शन किस तरीके से रहा। बट आप प्रेडिक्शन की बात करते हैं, मैं तो टीम अल्फा का नाम ऑलरेडी ले चुका हूँ, आप ओमेगा के साथ हैं। ऑप्शन क्या है मेरे पास? हाँ साथ में भी आप आ सकते थे, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए थे वहाँ पे। बट खैर मैं स्नैक्स का सोचता हूँ, मुझे अभी भी याद है कि नाइफ करने की ये कोशिश करेंगे 110%, क्योंकि पहले भी इन्होंने की है और एक बार फिर से भी ये कोशिश कर सकते हैं। अगर ये ओमन खेल रहे हैं और अगर किसी ने साथ दिया इनका तो मोस्ट प्रोबेबली काफी अच्छा हो सकता है, नाइफ की कोशिश हो सकती है। बट हाँ, बट डबल कंट्रोलर बहुत मुश्किल है। इनिशिएटर को तो हम डबल देखते ही हैं, बट कंट्रोलर मुश्किल, चांसेस का बहुत कम, लाइक ऑब्वियसली बहुत कम टीम उनको चुनती है, क्या पता इनमें से जो भी होगा वक्त बताएगा। अब भी कुछ कहना भाई पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे हर एक प्लेयर रेडी नजर आ रहा है। एजेंट्स भाई क्या होंगे, वो एक बड़ा सवाल है यहाँ पे कि क्या रखा जाता है, डबल इनिशिएटर, डबल कंट्रोलर, प्रेडिक्शंस है कुछ मेजी इस बारे में? डबल इनिशिएटर मोस्ट प्रोबेबली जी हाँ देखने को हमें मिल सकता है। एक प्लेयर जिनके बारे में हमने बात नहीं की क्रैगी, उज्जवल गेमर, हमने उनके बारे में ज्यादा चर्चाएं की नहीं, बट अभी से ही स्नैक्स को देख के पता नहीं क्यों मुझे उनका टैगलाइन ही याद आता है कि और मुझे ऐसा लगता है कि हर बार जब भी वो कैमरे के सामने आते हैं वो टैगलाइन के साथ आते हैं कि चलिए ठीक है ये हमारा टैगलाइन है और इसी से शुरुआत की जाएगी। बट खैर हाँ, हम इनकी बात कर रहे थे, उज्जवल गेमर, टेक्नो गेमर्स। उज्जवल, इनसे बातचीत में हमें पता चला कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि डिफरेंट गेम्स वो खेलते हैं, पसंद आता है, डिफरेंट एजेंट्स वो खेल सकते हैं। अभी यहाँ पे उनके लिए बेस्ट सूटेड कौन सा एजेंट रहेगा उसके तो हम बाद में बात करेंगे। बट यहाँ पे हैं राका जोन गेमिंग, पता नहीं क्यों क्रैकी, बट निकनेम्स जो होते हैं ना जो स्ट्रीम्स पे दिए जाते हैं, आप मुझे बोलने का मन करता है, दूसरी बार ला रहे हैं ये चीज, क्योंकि मुझे बोलने का मन करता है तो कह दीजिए नहीं। ठीक है ना, कहिए, मैं आपको फोर्स नहीं करेंगे इस चीज के लिए। बट मेन है कि एजेंट्स जो भी आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के इसमें। बट अभी फिलहाल के लिए लग रहा है प्लेयर्स ऑलरेडी गेम में हैं, वो वार्म अप हैं, वो वार्म अप कर रहे हैं फिलहाल के लिए, और जो फिलहाल के लिए उनकी तरफ से कुछ टेक्निकल इश्यूज जो भी होंगे लाइक दे आर गेटिंग सॉर्टेड आउट, एंड उसी के साथ मुझे लग रहा है फिर हमारा गेम भी बहुत जल्दी शुरू होगा। एंड एसेंट का मैप है तो मैं तो इंतजार नहीं कर सकता। हम भी बस रेडी हो ही रहे थे कि चलिए ठीक है मैप स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पे जो एजेंट सिलेक्शंस हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे। मैप पिक तो हमने खैर देख ही लिया, एसेंट का मैप है, और इंतजार कर ही रहा था कि चलिए एजेंट सिलेक्शन आएगा, क्या पता डबल इनिशिएटर के साथ हमें यहाँ पे प्लेयर्स दिखाई दे। और जो सबसे ईजी
कई सारे लोग बोलते हैं खेलना हो सकता है, वो रहती है सेज। तो देखना ये था कि सेज आप कौन भी वहाँ वैसे पे एक वक्त पे सेज में जस्ट सेज, क्योंकि सबसे इजी वही है खेलना, तो easy उसमें और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको डैमेज पड़ता है तो आप खुद हील करके फिर ऐसे भागते हुए दिखाई देते हो, बाकी वो सारी बातें एक तरफ है, बट और भी बेटर सेज प्लेयर्स हैं। आई नो, वॉल के साथ वो बाटल उनसे से सीखते हैं ना, plays उनसे सीखते हैं, बट एम का क्या किया जाए वो भी सीखा जा सकता है। जी। मेजी ऐसा कुछ नहीं है सीखा नहीं जा सकता यार। मेजी पहले सेंटिनल पे अटके हुए थे, मुझे लग रहा है हार्बर गेम में कोई ले जाएगा और हम जीतेंगे। बट देखिए मैं कहूंगा इंस्टा लॉक करने को मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। और बट करेगा सामने से बहुत सारी चीजें सुनने को भी मिलेगी, बट सह लेंगे उतना बनता भी है, क्योंकि जो चीज पसंद है आपको वो चीज करो तो ज्यादा बेहतर है। और मुझे लगता है हार्बर खेल के ज्यादा खुशी मिलने वाली, तो इंस्टा लॉक की तो जरूरत पड़ेगी। ऑफ कोर्स इंडीड पड़ने वाली है, और कोई स्टार्टिंग में पड़ेगी कुछ दिनों तक। लोगों को लगता है कि भाई आसान है सपोर्ट खेलना, क्योंकि आप जैसे प्लेयर जैसे जो कि यूजुअली हम जैसे प्लेयर्स को बेट करके किल्स ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा है, बट इसके बारे में चर्चा ना की जाए तो मेजी बेहतर है, बिकॉज सेंटिनल जो हमारे खिलाड़ी हैं सबसे उम्दा एक नंबर। बट यहाँ पे प्लेयर्स क्या खेलेंगे, मैं उसके लिए यार थोड़ा चिंतित हूँ। अभी तक तो पता चल जाएगा, क्लियर नहीं करेगा। देखिए मैं कहूंगा कि इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो प्लेयर्स अपने में कुछ ना कुछ सोच के आ रखे होंगे और पहले से उन्होंने डिसाइड किया होगा। जैसे हार्बर पहले से डिसाइडेड था कि कौन खेलने वाला है, उसी तरीके से बाकी जो एजेंट्स होंगे कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ, एसके रॉसी जिस चीज़ की बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ उन्होंने स्टडी करा है, तो क्या पता उन्होंने कॉम्बिनेशन कुछ स्टडी करे होंगे कि हार्बर के साथ क्या बेस्ट हो सकता है। ट्रेलर था, अर्ली एक्सेस में है भी ट्रेलर था, उसमें हमने कॉम्बिनेशन देखा है। बाय द वे हमने चेम्बर को देखा है, हमने रेस को देखा है, उसमें हमने डबल इनिशिएटर को देखा और साथ में हमने हार्बर को देखा। तो एक कॉम्बिनेशन तो हमने खैर ट्रेलर में ही देखा था। हाँ, कॉम्बिनेशंस हैं, बट अब यहाँ पे क्या आने वाला है वो नहीं कह सकते ना। एसेंट का मैप पे, ब्रीज के मैप पे हमने थोड़े बहुत कॉम्बिनेशंस देखे थे, बट हार्बर के साथ जो यूटिलिटी यूसेज है वो बहुत बेहतरीन है यार। मेरे को पोस्ट प्लांट मतलब डिफेंडर्स के लिए वो बहुत बेहतरीन लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चाहे रीटेक की बारी हो, चाहे आपको हेल्प चाहिए हो अटैक करने में, ओवरऑल बहुत अच्छा है। बट डिफेंडर्स के लिए रीटेक करना लाइक अलग ही है भाई। आपके पास कोव है, इस्तेमाल कीजिए, हार्ड डिफ्यूज कीजिए, उसके बाद बाहर निकल के जो भी प्ले करने बनाने बहुत आसान है, जो कि बाकी कंट्रोलर से ज़्यादा इजी नहीं है, बिकॉज बाकी स्मोक्स कुछ सेकंड तक स्पैमेबल ऑब्वियसली नहीं है, उनको आप इजीली स्पैम कर सकते हैं। बट कोव नहीं है भाई, आप नहीं स्पैम कर सकते। 15 गोली तो आपकी वैंडल की ऐसे जाने वाली है तोड़ने के लिए वो शील्ड, और उसके बाद फिर जाके कहीं स्पैम लेगा, लगे ना लगेगा। बट डिपेंड करता है ना प्लेयर्स कितने वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। 15 वैंडल बुलेट्स तो हमने जान ली, अब पता चला 3-4 प्लेयर उनके वहाँ पे सर्वाइव कर रहे, तो बस गोलियां बरसती गई और फिर वो टूटा और फिर पता चल रहा है कुछ और ही हो गया। करने की कोशिश तो थी सही, बट कई सारे ऐसे भी हमने क्लिप्स देखे हैं जहाँ पे पूरी साइड को हाई टाइड से कवर तो किया गया, बट राउंड बना दिया गया कि चलिए ठीक है, इसका तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, साथ में कोव का भी इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हमने कैस्केड का इस्तेमाल तो करते हुए प्लेयर्स को देखा भी है। और एक सबसे बढ़िया चीज़ अगर आप क्लिप की बात करो जो मुझे देखने को मिली, जिस तरीके से हम लोग अगर स्काई की बात करें, अगर हार्बर और स्काई का अगर आप कॉम्बिनेशन देखें कितना बढ़िया हो सकता है। कैस्केड के साथ आप रश करने की कोशिश कर सकते हैं, और साथ में हमने देखा है कि ब्लाइंड का इस्तेमाल किया गया, फ्लैशलाइट का इस्तेमाल किया गया, वहां से प्लेयर्स बड़े आसानी से साइट एंट्री कर सकते हैं। डिफेंड करने के लिए भी कुछ ना कुछ रणनीतियां निकाली जाएगी कि उसको रोका कैसे जाए। अगर स्काई के साथ कोई रश करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप ब्रीच की बात कर लो, कोई अगर ब्रीच के साथ रश करने की कोशिश कर रहा है, क्या चांसेस हो सकते हैं? बहुत कुछ है यार। लाइक मेरे को तो अभी लाइक लाइनअप्स की बात आ रही है। मीन कोव के जो अगर आप पोस्ट प्लांट सेटअप की बात करें, जैसे कि गन्स का आप स्पैम नहीं कर सकते, वो एक ऑब्वियसली बात है, बट लाइनअप्स आ रहे हैं, वो एक बड़ी चीज़ है कि कभी कभी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो कोशिश करेंगे भाई हाँ स्पैम करोगे, एम इन का प्लांट है, हम फटाफट से हाफ डिफ्यूज कर लेते हैं, बट लाइनअप्स एक बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से यहाँ पे प्लेयर्स के लिए बनने वाली है, और मुझे लगता है कि आज भी बनेगी। हार्बर के साथ और भी जो मैं सिनारियो सोच रहा था ना अटैकिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं टीम्स के लिए, बिकॉज जो रेकनिंग है ना वो बहुत पावरफुल है। तो मुझे लग रहा है एज लाइक अभी स्टार्टिंग में और ऑलरेडी केवल 7 और पॉइंट्स हैं, और उसके बाद आपके पास अल्टीमेट है, सो प्लेयर्स उसको बड़े ही अच्छे तरीके से यूज करने वाले हैं, और अदर आई शुड से अब्यूज 110%। बट एंटीडोट एंड एसके रॉसी ने लिया, तो मुझे लगता नहीं है कि साथ ज्यादा टाइम लेने वाला है, और बड़े आसानी से वो हमें फेल होता हुआ दिखाई देगा। बट खैर चलिए, केजे मॉर्टल जरूर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। अंकिता सी फेड के साथ है, वहीं पे हाइड्रा फ्लिक की बात करें, रेज बहुत ज्यादा बढ़िया खेलते हैं। मैं कह रहा था ना, सैचल्स एंड ब्लास्ट पैक हर चीज का इस्तेमाल उनका बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से होता है। इसके रॉसी हार्बर के साथ हैं, एंड टेक्नो गेमर्स हमें जेट के साथ दिखाई देंगे। स्काउट की बात करें, वो भी हमें जेट के साथ देखने को मिलने वाले। जाया केजे पे हैं, स्नैक्स एक बार फिर से ओमेन के साथ हम इसी चीज की बात कर रहे थे, और
ब्रीच भी हमें देखने को मिलेगा, राका जोन दिखाई देंगे उसके साथ। सो एक तरफ डबल कंट्रोलर बिल्कुल, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएगा डबल डुअलिस्ट। बट ऐसा ये सीन जो अटैकिंग में है, हम कुछ और बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे डबल इनिशिएटर एंड बाकी सारी चीजों हाँ, की, बट बट लग खैर रहा है वो नहीं आने वाला। बट यहाँ पे टीम ओमेगा के साथ, चलिए मैं गया तो हूँ, मेरे पास ऑप्शन कोई था नहीं इसलिए मैं गया हूँ। बट अगर आप दूसरी तरफ देखिए, मेरे को बहुत बेहतरीन लग रही है टीम अल्फा का एजेंट। देखिए अब आप चेंज कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ कि एजेंट कॉम जो है वो बेटर लग रहा है। बिल्कुल, फेड के साथ जो यूटिल का यूसेज है वो बेटर होगा, इन्फॉर्मेशन होगी काफी अच्छी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत टीम ओमेगा लैक करेगी। हाँ, अब इन राउंड अगर वो वाइट स्विंग करके परेशान करेंगे वो बात अलग है, बट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से बहुत एडवांटेज मिलने वाला है जो मुझे लगता है। मैं तो सोचता हूँ कि कैस्केड के साथ अगर प्रॉलर्स का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो एक बार के लिए सोचे कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, क्या बढ़िया तरीके से आप साइड एंट्री करा सकते हैं। बट खैर चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले राउंड की। टीम अल्फा इस वक्त डिफेंड करते हुए दिखाई देगी, टीम ओमेगा आपको अटैकिंग पोजीशन पे देखने को मिलने वाला है स्काउट जेट के साथ। बस डब्ल्यू गेमिंग हमें देखने को यहाँ पे मिलता हुआ। चलिए कैस्केड का भी इस्तेमाल किया गया, साथ में पैरानोया का भी इस्तेमाल किया गया और फ्लैशपॉइंट, हर एक चीज का उन्होंने इस्तेमाल किया गया। बट पीछे अगर बात करें दूसरे, हम बात कर ही रहते हैं यहाँ पे एसके रॉसी की कि वो किस तरीके से कैस्केड का इस्तेमाल करेंगे। और आप देखिए इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि जो डिफेंडर्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ टैक्टिक्स तो होंगे कि जो अटैक कर रहे हो उनको पीछे कर पाए। बट चलिए इसी के साथ सबसे पहला राउंड बड़े आसानी से अटैकर्स के खाते में जाता हुआ। यूटिल सबसे पहली चीज बहुत बेहतर, आई मीन हर एक चीज आई, आफ्टर शॉक, उसके बाद ब्रीच का स्टन ऑन दी जेनी। भाई टेक्नो गेमर्स बेचारे फंस गए थे, पहले पैरानोया को डॉज किया, उसके बाद सपोर्ट भले आने लगा था टीम से, बट इट वाज ऑलरेडी टू लेट एंड प्लेयर साइड पे घुस के स्काउट विद 3K। दैट वाज अ ब्रिलियंट राउंड फॉर टीम ओमेगा एंड दैट्स अ गुड स्टार्ट। बट अभी शुरुआत है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑन द अदर साइड वी हैव एंटी कीपर, यहाँ पे अगर आप देखें इट्स लुकिंग लाइक अ बी स्टैक फ्रॉम टीम अल्फा, बट यहाँ पे दोनों तरफ से अर्ली एंड उसके बाद इतना यूटिल डाउन, इतना प्रेशर पुट किया जा रहा है, बट एंड इज स्टिल फाइटिंग एंड ही गेट्स टेकन डाउन बाय टेक्नो गेमर्स, बट दैट्स नॉट जस्ट इनफ बिकॉज़ स्काउट इज हियर। स्काउट एक और पिक, एक के बाद एक, दो एंड नाउ अगेन विद द ट्रिपल किल। That's incredible. मैं बस ये देख रहा हूँ कि किस तरीके से डब्ल्यू गेमिंग यहाँ पे चल रही है। बस आप दबाते जाए डब्ल्यू को और आगे आगे बस आपको देखने को मिलने वाले। और सबसे अच्छी चीज आप देखें कि कैसे सामने वाले ने रीड करा कि चलो ठीक है वो शायद अब भी जा सकते हैं, वो भी स्टैक करके बैठे हुए थे, सामने से ये भी स्टैक करके आ ही रहे थे, बट दोनों तरफ से बराबरी का मुकाबला। बट स्काउट बैक टू बैक 2 राउंड 3K वो लेके गए हैं। हम इसके रॉसी को 4K कहते हैं, बट फिलहाल के लिए स्काउट कुछ और मूड में हमें दिखाई दे रहे हैं। एंटीडोट के साथ वो भी हैं तो सही, बट चलिए सामने फुल बाय के साथ दिखाई देंगे टेक्नो गेमर्स, उनको ऊपर निकलना है। बट फिलहाल के लिए वैंडल बिल्कुल देखने को जरूर मिलने वाला है। बट हम बात कर रहे थे रेस की और हम बात इसी चीज पे कर रहे थे कि हाइड्राफ्लिक बढ़िया तरीके से रेस खेलना वो जानते हैं, बट कैस्केड का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, एंटीडोट थोड़ी तो मुश्किल में थे और ये पेंशियल मुझे लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल में डालने वाला है एंटीडोट को, और इसी के साथ खत्म भी हो गया। बट अभी भी 2 प्लेयर्स हैं, दे हैव द यू नो कंट्रोल ऑफ ए शॉट, बट अभी वो साइड लेना रोज आया चेक नहीं करेंगे। डाउन ए मॉर्टल द अदर केज उनको पकड़ने वाले हैं। स्काउट एक 1 वर्सेस 3 फिर से क्लच करना होगा, क्या कर पाएंगे? उनकी पोजीशन पता है एंड प्लेयर्स आर प्लेइंग इट पैसिवली, बट 1v1 उनको ऑफर किए जाएंगे। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। अगर स्काउट हर एक 1v1 बैटल जीतते जाएंगे, इट माइट मेगा के लिए जानते हैं स्काउट कहाँ है, कैन बी एनीवेयर एंड पेशेंटली उनके पास 45 सेकंड है इस राउंड को जीतने। यहाँ पे he won't check under heaven and Techno Gamers will secure the round. प्रॉब्लम ये थी कि स्पाइक भी स्काउट के पास थी भी नहीं, उनको स्पाइक उठाने के लिए कहीं तो जाना था। कोशिश की उन्होंने, बट जैसे ही वो हेवन से नीचे आए आवाज़ गई, और आवाज़ गई तो उन्होंने चेक भी नहीं किया कि चलिए यहाँ पे कोई मौजूद भी रहेगा। इसी के साथ ये वाला राउंड भी खत्म, और आप कह सकते हैं कि एक फुल बाय के बाद एक थोड़ा कमबैक ज़रूर हमें देखने को मिलता है, बट अभी भी टाइम है। टीम अल्फा पहला राउंड उन्होंने जीता तो है, बट वहीं पे अगर टीम ओमेगा की बात करी जाए तो आप स्काउट को देखें, उनके पास अपना अल्टीमेट ब्लेड स्टॉर्म देखने को मिलेगा और खेलते हुए दिखाई देंगे, जिसमें नाम ले रहा था। बट अंकित 80 की बात करें, मे भी परेशानी में डाल सकते हैं स्काउट को, और वो चीज़ हुआ भी। शॉट्स तरीके से कनेक्ट हुए, ये बढ़िया रहा कि
पैरानोया, और उसके बाद उन्होंने प्रॉलेस का इस्तेमाल किया। बड़े रॉसी कैस्केड हाई टाइड का भी इस्तेमाल वो कर सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने किया भी है और उस चीज का फायदा अंकिता सी को ज्यादा मिलता हुआ। टेक्नो गेमर्स एंटीडोट को उन्होंने भी डाउन किया, बट स्नैक्स विद अंकिता सी एंड टेक्नो गेमर्स जीते भी। बड़े इसके रॉसी पीछे मौजूद थे और इसी के साथ बैक टू बैक दूसरा राउंड भी टीम अल्फा के खाते में। वेपनरी का काफी अच्छा इस्तेमाल, बट द मेन थिंग इज स्काउट बहुत कोशिश कर रहे थे अपनी टीम के लिए फास्ट एंट्री निकालने की, बट इंस्टेंट शटडाउन के बाद जब डुएलिस्ट चला जाता है ओनली डुएलिस्ट टीम को प्रॉब्लम्स होने वाली है। जो प्ले था ए शॉट से एसके रोसी का, स्मोक के बाहर आके पहला पीक निकालना, उसके बाद कोम का इस्तेमाल करके, उस शील्ड का इस्तेमाल करके और उसके साथ हाई टाइड का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना टू मेक अ प्ले, दैट वाज फैंटास्टिक। स्नैक्स की तरफ से कोशिश बहुत बेहतरीन, 2 प्लेयर्स का उन्होंने पिक निकाला, बट उससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। एंड नाउ इकोनॉमी इज गॉन। टीम ओमेगा को थोड़ा सा पेशेंटली खेलना पड़ेगा ये राउंड। चांसेस हैं कि अगर कुछ वेपन ड्रॉप्स कर पाए सम हेडशॉट्स के साथ तो मे बी चांसेस, बट नो वे। एसके रोजी एक डर्टी शॉट लैंड करेंगे एंटीडोट के ऊपर एंड एक काफी अच्छा पास है, बट अभी उनको ट्रेड करने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ पीक करेंगे। स्नैक्स बट यहाँ मैं कहूँगा कैस्केड का बहुत अच्छे तरीके से एसके रोसी के द्वारा इस्तेमाल किया गया। आप देखिए कि वो जस्ट एंट्री पे उन्होंने छोड़ दिया, उसको रोक दिया कि चलिए ठीक है, यहाँ से अगर कोई पीक करता है तो फिर काम बनाया जा सकता है। बट मल्टीपल पीक्स हमें वहाँ पे देखने को मिले और मॉर्टल बैक टू बैक 2 किल्स निकाल के जाते हुए सामने से। अभी भी आप बात करेंगे स्काउट की, के पास मार्शल है, राइट ऑफ फ्लिक उन्होंने डाउन किया था। स्काउट एचपी बहुत ज्यादा कम एंड मॉर्टल विद 3K स्काउट को खत्म करेंगे और इसी के साथ बैक टू बैक ये तीसरा राउंड है जब आप टीम अल्फा को जीतते हुए देखेंगे। मॉर्टल का खैर ये वाला जो कोना था किसी ने चेक किया भी नहीं, तो ये बहुत परेशानियां हुई, बट जाया उनकी एचपी तक यहाँ पे थी नहीं, बट उसके बावजूद उन्होंने कोशिश करी। मॉर्टल ने कुछ और करने दिया नहीं, बट इसी के साथ 3 राउंड आप देखें टीम अल्फा के पास। बट अब आप कह सकते हैं कि टीम ओमेगा बाय के साथ आएगी और कुछ बेहतर करने की तो कोशिश करी जाएगी। ऑफ कोर्स कुछ अल्टीमेट्स भी रेडी होंगे यहाँ पे, उनके पास 2 अल्टीमेट्स हैं वो करने के लिए। हार्बर का रेकनिंग, दैट्स गोना बी मैसिव एंड दोनों तरफ हार्बर के पास अपने अल्टीमेट्स के लिए, बट वंस अगेन लुक्स लाइक अ बी पुश। टीम को अर्ली के बाद हाईलाइट का इस्तेमाल, बट इस पुश को डिनाई किया जाएगा। इसके साथ साथ स्नैक्स अल्टीमेट करके 4 आउट करना चाहते थे, मॉडल ने डिनाई किया। मॉडल इज स्टिल फाइटिंग, गुड फॉर 2, बट फाइनली स्काउट उनको टेक डाउन करते हैं, जिससे वो ऑलरेडी टैश करके साइड जा चुके थे एंड इट्स गोना बी अ 4v3 रीटेक। अब रीटेक में यहाँ पर कितना स्ट्रांग होगा ये बड़ा बिल्कुल, बस वहीं पे कैस्केड का इस्तेमाल करें एक बार फिर से, लीजिए थोड़ी बहुत। इसी के साथ अल्टीमेट पहला हमें हार्बर का देखने को मिलेगा और एसके रॉसी उसका फायदा ना उठाए हो नहीं सकता। एक को डाउन किया विद 3 किल्स वंस अगेन, बट अंकिता सी उनको रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। बट वहीं पे बात करें एंटीडोट, उनको डाउन किया जाएगा अंकिता के द्वारा एंड टेक्नो गेमर्स ऑन बोर्ड। यप बिल्कुल, बट आप बात कर रहे थे अल्टीमेट की, हमने बात भी करी। रेकनिंग इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया गया, बट वही बात हम जिस तरीके से पहले कर रहे थे कि अगर वहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स हैं तो मुश्किल हो सकता है एक सिंगल प्लेयर को साइड के अंदर एंट्री करने का। बिल्कुल थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट एंटीडोट कोशिश थी यार राउंड जीतने की, जीत नहीं पाए। बट दूसरी तरफ टीम अल्फा के लिए 4 राउंड्स आ चुके हैं लगातार। स्टार्टिंग के 2 हारे थे, बट दैट डजंट मैटर बिकॉज अभी के लिए 2 राउंड की बड़ी लीड दे हैव इन द पॉकेट। सोचना पड़ेगा टीम ओमेगा को कि कैसे अगले राउंड्स उनको खेलने हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है फिलहाल के लिए बिकॉज द यूटिलिटी जो आ रही है भाई, मॉर्टल ने 2 प्लेयर्स को टेक डाउन किया और उसके बाद साइट अपने नाम बचा के रखी। प्लेयर्स आ गए, बैकअप आ गया बिकॉज दे नो कि अभी प्लेयर्स स्लो नहीं खेल रहे, वो डब्ल्यू कर रहे हैं, टेंशन मत लो। बट नाउ दिस इज वेयर माइंड गेम्स आने वाले हैं। एसके रॉसी के ऊपर एक स्टन आया ही स्कॉलिंग विद आउट कि भाई शॉट चल रहा है, ब्राउजर के साथ वो पीक करेंगे, पॉइंट 1 बहुत सारा डैमेज। दूसरी तरफ जेट को भी दिया, बट स्नैक्स इज हंटिंग हिम डाउन, उनको टेक डाउन किया, बट हाइट ऑफ लेक इज स्टिल होल्डिंग द साइड। मैं कहूंगा जिस तरीके से अंकिता ने साथ दिया है एसके रॉसी का, आप देखें प्रॉलेस का इस्तेमाल कर जो प्लेयर्स रश करने की कोशिश कर रहे थे मिड साइड से, ए शॉट से उनको रोका गया, बट एसके रॉसी पहले ही फंस गए, वहां से निकलने का कोई मौका उनको मिला नहीं। स्काउट की बात करें, एचपी बहुत ज्यादा कम, खुद को बचाने की कोशिश की जा सकती है, बट वहीं पे स्नैक्स साइड एंट्री हो चुकी है। बट बात करी जाए स्काउट की, अभी भी वो मिड पे बैठे हुए हैं, बस वो इंतजार कर रहे हैं, मार्केट पे इंतजार कर रहे हैं। उनको भी पता है भाई उनके पास उतनी कुछ खास एचपी है नहीं, बट चलिए स्पाइक ऐसे बीच प्लांट किया गया, दोनों केजे उनके पास अल्टीमेट है अपने अपने। मॉडल ऑलरेडी अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए, बट वहीं पे स्नैक्स की बात करें वो डाउन किए जाएंगे। स्काउट यहाँ उनका गेम ये हो सकता है, बट की बात करें थोड़ा लेट हो गई अल्टीमेट में, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कि साइड ऑलरेडी एंटर कर गए थे प्लेयर्स,
और अकेले फंस गई यहाँ पे जाया, और इसी के साथ ये राउंड भी उनके हाथ से निकलता हुआ। मैं कहूँगा थोड़ा सा लेट जरूर हुए अल्टीमेट यूज करने में, बट चलिए एक और राउंड बड़े आसानी से टीम अल्फा के खाते में जाता हुआ। और मुझे लगता नहीं है क्रैकी कि मैंने जो प्रेडिक्शन है वो कहीं से भी गलत की थी। अभी गेम खत्म नहीं हुआ मेजी, ज्यादा उछले ना तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, बट यहाँ पे स्काउट की तरफ से बहुत बड़ा प्ले बन सकता था। आई मीन जैसे ही वो लॉकडाउन इनिशिएट हुआ था, he could have walked in, काफी लोग थे, थोड़े से कम कॉन्फिडेंट थे उधर जाने के लिए, बट वहाँ पे प्ले बन सकता था यार, कोशिश की जा सकती थी। एक तो अटैकर जो केजे का अल्टीमेट था काउंटर अल्ट करने के लिए, उसका इतना बेहतरीन इस्तेमाल नहीं मिल पाया। वो थोड़ा सा पहले आता, इंस्टेंटली जैसे सामने से आया था, तो मे बी उसका एडवांटेज ज़्यादा मिल जाता। पर चलिए सेलेस 5-2 की स्कोर लाइन, टीम ओमेगा थोड़ी सी परेशानियों में, एंड अब सेटअप थोड़ा बहुत बदल दिया है। पिछली बार आपको रॉसी नजर आ रहे थे शॉट पे, नाउ इज प्लेइंग डीप मिड, एंड वो अपनी टीम को हेल्प करना चाहते हैं बैकलाइन से, बिकॉज वो जानते हैं कि वो अगर आखिरी तक जिंदा रहेंगे कुछ ना कुछ प्ले बनाना चाहते हैं। एंटीडोट डिनाई करेंगे। अब उसके बाद पूरा यूटिल डाउन एंड द डैश इन स्काउट फुल अप बिट एग्रेसिव, राइट क्लिक मिस कर दिया, नो, एंड ही हैज टू पे द प्राइस। एसके रॉसी एक के बाद एक 2 फ्रैग्स ले जाएंगे, एंड दैट्स बिग वन। 4 वर्सेस 3 टीम अल्फा के पास ह्यूज एडवांटेज, भले ही लो है बट दैट डजंट मैटर। ब्रीच के पास अल्टीमेट था, राका जोन, मुझे लगा था कि वो यूज करेंगे थंडरस्टॉर्म का, बट ऐसा कुछ हमें देखने को मिला नहीं। बट स्पाइक प्लांट हो ही रहा था। एंटीडोट एसके रॉसी डाउन किए गए हैं एंटीडोट के द्वारा, बट अभी भी स्पाइक प्लांट किया नहीं गया एंटीडोट, अभी भी पोप के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऊपर टरेट है, तोड़ा गया, अभी भी स्पाइक प्लांट नहीं किया गया। मॉडल बस इंतजार कर रहे हैं, बट आप देखें टेक्नो गेमर्स को रश करने की कोशिश कर रहे थे, अभी भी वो इंतजार कर सकते थे कि चलिए अभी तक स्पाइक प्लांट हुआ नहीं। एंटीडोट अभी भी स्पाइक के साथ हैं, वो बस शायद कह रहे हैं कि चलिए ठीक है थोड़ी देर के लिए इंतजार किया जाए, उसके बाद और करने की कोशिश की जाएगी, बट मॉडल वो इंतजार नहीं करने वाले। इस वक्त अपनी टीम से टॉप ट्रैक करते हुए आपको दिखाई देंगे। स्नैक्स एक बार फिर से स्पाइक प्लांट करने की कोशिश, अंकिता एक बढ़िया पोजीशन के पास आपको देखने को मिलेगी। जाया चेक जरूर कर रही थी कि कोई तो वहां से आएगा, और वो चीज हुई। अंकिता उन्होंने जाया को डाउन किया था, बट स्नैक्स वो भी खत्म किए जाएंगे मॉडल के द्वारा। और इस वक्त एक और राउंड आप देखें जिस तरीके से हमें टीम अल्फा खेलती हुई दिखाई दे रही है, बट ये वाला जो शॉट था, सारे नाइफ एक तरीके से आप कह सकते हैं वेस्ट हुआ जरूर है, बट एंटीडोट वो कोशिश कर रहे थे चलिए कम से कम अब तो प्लांट किया जाए, बट पॉसिबल वो हुआ नहीं। सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे थे। पहले स्मोक का आई बिलीव वेट किया जाता था ए शॉट पे करने के लिए, उसके बाद एंटी वाज ट्राइंग टू प्लांट, बट ना, अनलकी सिचुएशंस यहाँ पे टीम्स के लिए बनती हुई, स्पेशली टीम ओमेगा के लिए। आप कहते हैं जो टीम आप चुनते हैं वो हारेगी, सिचुएशंस बदल गई है। बट यहाँ पे फिलहाल के लिए टीम ओमेगा एक के बाद एक बार बाय किए जा रहे हैं, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम, एंड एक राउंड अगर सेव करे मे बी बेटर वेपन्स अभी के लिए हाइड्रा फ्लेक बैटल, बट नो वे हाइड्रा फ्लेक इतनी सारी बुलेट स्विफ्ट करने वाले हैं। इसके लड़ाई तो प्लेयर्स उनकी तरफ अब यूटल डालने वाले हैं, गेटिंग सपोर्ट, उनको एडवांटेज मिल सकता है यहाँ पे, और एंड ही गेट्स इट। भले ट्रेड कर लिया गया, बहुत देर बाद किल फीड पे देखा ना, ये पोजीशन इनक्रेडिबल, फाइंड्स टू इतना बढ़िया नंबर्स एडवांटेज ले आए थे, बट फाइनली गेट्स ट्रेडेड ऑफ। उसके बाद अल्टीमेट इंस्टेंटली की जाएगी, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कोई भी टैप होने की, सो दे नो दे नॉट हियर, गेम क्लियर कर दिया है। और उसके बाद प्राउलर का इस्तेमाल करके मिड पे है, उसके बाद एक और प्राउलर अब जा चुकी है प्लेयर्स के पास, जाया इज गोना वाइड स्विंग मॉडल वंस अगेन, इट्स गोना बी हार्ड बिकॉज़ राका जो उनके पास ये रोलिंग थंडर है। मैं सोच रहा था इतना टाइम हो गया रोलिंग थंडर का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। आप देखिए ये 9वां राउंड है, पूरी यूटिल है। थोड़ा टाइम पहले हमने देखा था रोलिंग थंडर में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता था, बट इसके पहले वो डाउन हो गए। बट मॉडल जिस तरीके से इन्होंने अभी तक खेला है और जिस तरीके से ये टॉप फ्रैग कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि पॉसिबिलिटीज अभी भी है। देखें अभी भी उनके पास टरेट है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बट शायद उन्होंने टरेट का इस्तेमाल किया नहीं, अब जरूर करते हुए आपको दिखाई देंगे। बट इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट आप देखें जाया को उन्होंने भी सेम टाइम पे ही टरेट का इस्तेमाल किया, एक ऑनलाइन का इस्तेमाल भी किया गया है, टरेट को थोड़ा जरूर है, बट मॉडल की पोजीशनिंग पूरी तरीके से रिवील्ड है। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि कोई पीछे से आने की कोशिश कर भी नहीं रहा, बट वहीं पे जाया वर्सेस मॉडल होता हुआ हमें देखने को मिलता हुआ। मॉडल जाया को उन्होंने डाउन किया, बट अभी भी आप देखें राका जोन क्या नाइफ करेंगे। जी हाँ, राका जोन, और इसी चीज की मैं बात कर रहा था, कम से कम एक नाइफ तो जरूर हमें देखने को मिलेगा, और राका उनको मौका मिला, पूरी तरीके से भुनाया, और पहला नाइफ इस गेम का। बट मॉडल की तरफ से इट वाज अ ग्रेट ट्राई टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल जिस तरीके से जेनी पे कूदे, कॉट जाया ऑफ गार्ड,
राकाज़ोन ऑलरेडी बहुत लो हो चुके थे, सो आई मीन उन्होंने देख लिया मॉर्टल डजंट केयर कि वो कहाँ है, यू नो उसकी टाइम उनके पास है नहीं, ही हैज टू स्टिक नाइफ के लिए गया एंड दे वर सो हैप्पी। आप रिप्ले में देख ही सकते हैं किस तरीके से खुश थे प्लेयर्स नाइफ करके। एंड अभी मॉर्टल नाइफ हुए हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा गुस्सा आने वाला है, वो अब बदला तो लेंगे में से। देखिए मैं कहूँगा कि अब कॉर्नर्स पकड़ने का वक्त आ चुका है। अब आप डिफेंड कर रहे हैं, अब आप कॉर्नर्स पकड़ के बैठे रहे और बदला तो लिया जाएगा, एक नाइफ तो रिटर्न में दिया जाएगा, बट देखना यह है कि वो कब तक हमें देखने को मिलता है। बट चलिए इसी के साथ जो 10वां राउंड है वो हमें देखने को मिलेगा। जाया उन्होंने शुरुआत की है, हाइड्रोप्लिक की बात करें जब वो भी डाउन हुए, स्नैक्स उनका भी ट्रेड यहाँ पे लिया गया, अंकिता सी अगेन मॉर्टल हमें देखने को मिलेंगे और साथ में टेक्नो गेमर्स। देखना ये है क्या कमाल कर सकते हैं, बट टेक्नो गेमर्स विद दैट हेडशॉट बट स्काउट वो मौजूद थे। एक बार फिर से मॉर्टल अकेले बचे हैं और अब 1v3 का सिचुएशन है, स्काउट वर्सेस मॉर्टल, क्या हमें वो देखने को मिल सकता है। बट राकाज़ोन अभी भी उनके पास हमें रोलिंग थंडर देखने को मिलेगा, अकेले हैं और यूटिल की कमी नहीं है सामने, सो यू नो मैं इशारा कहाँ कर रहा हूँ, एक और नाइफ पॉसिबल, एक और राउंड टीम ओमेगा का तो ऑब्वियसली चांसेस काफी ज्यादा हैं, बट मॉर्टल एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द हेड ऑफ दिस क्लच मिनिस्टर। क्या ये राउंड मिल पाएगा? नहीं, दैट्स द आंसर, दैट्स अ बिग नो फॉर टीम अल्फा। बट टीम ओमेगा क्या एक और नाइफ, ये एक बड़ा सवाल। मुझे बस देखना मॉर्टल जा भी रहे हैं या फिर नहीं। चलिए जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से वो फ्लैश पॉइंट का इस्तेमाल किया गया, बॉट लाइन का भी उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल। बट हाई टाइट को आप देखें जिस तरीके से इस्तेमाल करते हुए खिलाड़ी हमें दिखाई दे रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि ये बैक टू बैक जिस तरीके से कमबैक हम टीम ओमेगा का देख रहे हैं, जैसा आप कह रहे थे अभी तो गेम बस शुरू हुआ है, अभी तो हम कहीं हाफ तक भी नहीं पहुँचे, तो क्या पता इसी तरीके से कारवां जारी रहे और टीम अल्फा के बहुत ज़्यादा करीब हमें टीम ओमेगा जाती हुई दिखाई दे। बट मॉर्टल बैक टू बैक जिस तरीके से वो आखिरी प्लेयर बच रहे हैं, ऑब्वियसली वो बी साइड पे रहते हैं, अपना सेटअप लेके तैयार रहते हैं कि इन केस अगर कोई बी जाने की कोशिश करे। बट मैं अभी भी कह सकता हूँ कि राकाज़ोन उनके पास अपना रोलिंग थंडर है और अभी आप देखें रेकनिंग का भी साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक्चुअली पूरे में आपको स्लोली खेला जा रहा है, हाइड्रोप्लिक इज प्लेइंग इन सच अ ट्रिकी पोजीशन, बट यहाँ पे हाउ डज ही प्ले इट? स्मोक के अंदर, स्मोक अगले 5 से 7 सेकंड में फिल होने वाला है एंड ही विल बी ओपन, बट क्या उससे पहले वो कुछ हेड टैप्स कर पाएंगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। स्मोक जाता है, देयर इज नो वन ऑन हिज कॉन्टैक्ट, आईडिया नहीं अभी क्या हो रहा है फिलहाल की, बट एक ट्री का वो स्मोक अब इन्फो देगा दैट इट्स गेटिंग ए शॉट एंड उसके बाद क्राउडर का इस्तेमाल, बट नो वे, हाइड्रोप्लिक ही गेट्स वन टैप लाइक दैट एंड उसके बाद अब प्लेयर्स को ए शॉट ओपन मिल जाएगा, दे हेडिंग टुवर्ड्स ए साइड फिलहाल पे ओपन जरूर है, बट द मेन थिंग इज I suggest you move and he's already on towards B. They're gonna make a big fake and वो जाने वाले हैं। देखिए हाई टाइड का किस तरीके से इस्तेमाल किया है A पे to sell that fake and उससे भी बेटर प्लेयर्स ऑलरेडी B पे पहुंच चुके हैं। They are just gonna take the CT control as well and राकाज़ोन की इतनी सारी यूटिल is gonna be a big pain for team Alpha. अंकिता थोड़ी देर के लिए उन्होंने आगे आने की कोशिश करी, उनको भी पता है शायद अभी भी थोड़े बहुत फ्लैश पॉइंट्स बचे होंगे और उस चीज़ का इस्तेमाल किया गया राकाज़ोन के द्वारा। शुरुआती दौर में थोड़े बहुत शॉट मिस करे गए बट फाइनली कनेक्शंस बनाए गए। अंकिता सी इस वक्त डाउन, बट मॉर्टल की एचपी आप देखें बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, बट फिर भी जाने की कोशिश कर रहे थे। बट स्काउट वर्सेस मॉर्टल हमने बहुत बार होते हुए देखा भी है, एक बार फिर से वो चीज़ हम देख रहे हैं। टेक्नो गेमर्स उन्होंने अपने प्लेट स्टॉर्म का इस्तेमाल कर तो लिया है, बट देखना यह है किसी को डाउन कर पाएंगे। जी हाँ, स्नैक्स की एचपी थोड़ी डाउन थी, बट स्काउट उनकी एचपी बहुत ज़्यादा कम है, बट शायद उन्होंने देखा नहीं कि वहाँ पे और भी प्लेयर्स हैं। निकल गए, एक रश आ रहा था, उन्होंने आवाज़ सुनी, फाइनली एक बार फिर से उन्होंने आवाज़ सुनी ज़रूर है, बट जाया सबसे पहले उनको देखा गया। टेक्नो गेमर्स डाउन और इसी के साथ एक और राउंड टीम ओमेगा मैं कहूँगा बड़े आसानी से उन्होंने अपने नाम निकाला, क्योंकि अभी भी आप देखें रेकनिंग का इस्तेमाल किया नहीं गया। रोलिंग थंडर की बात करें वो भी अभी भी उनके पास है, बहुत सारे अल्टीमेट्स उनके पास हैं तो सही। टीम अल्फा की इकोनॉमी खत्म है बिल्कुल, और ये आखिरी राउंड है जी, इससे पहले एंड इतने अच्छे वेपनरी उनके पास नहीं होंगे, मे बी आर्मर्स ना हो, मे बी उसके साथ साथ यूटिलिटीज पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, सो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट फिलहाल के लिए जस्ट लुक एट द बाय शॉटगन, बुलडॉग, स्पेक्टर, 2 वैंडल्स, इकोनॉमी नहीं है इतनी अच्छी। बट दूसरी तरफ टीम ओमेगा उनके पास बहुत कुछ है इस राउंड में कमिट करने, एंड ऑब्वियसली कीजिएगा लॉकडाउन टीम पे माइट जस्ट बी द गुड वन, बट ए पे कंट्रोल लेने की कोशिश टीम अल्फा की। ओके, मुझे लगा था कि शायद हमें रेकनिंग देखने को मिला, बट शायद उन्होंने पिछले राउंड में ही उसका इस्तेमाल कर लिया था। बट राकाज़ोन गेमिंग अभी भी साइड एंट्री को पूरी तरीके से तैयार हैं, फॉर्ट लाइन का इस्तेमाल किया, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं, बट वहीं पे अगर स्काउट की बात करें सीधा डैश किया साइड के अंदर देखने को मिलने वाले, बट केजे साइड के बाहर एक बढ़िया फॉल्ट लाइन का इस्तेमाल
सॉरी फ्लैश पॉइंट का एक बढ़िया इस्तेमाल किया गया वहाँ पे राका जोन के द्वारा, बट वहीं पे अगर एसके रॉसी की बात करी जाए एक बार फिर से थोड़ा आगे निकलने की कोशिश। स्पाइक ऑलरेडी प्लांट कर दिया गया, जाया उनके पास भी अल्टीमेट देखने को मिलेगा, मॉर्टल उनके पास भी उनका अल्टीमेट देखने को मिलेगा। शायद इस बार तो सही टाइम पे हमें वो अल्टीमेट लॉकडाउन देखने को मिले, बट अभी तक उसका इस्तेमाल किया नहीं है। ब्रीच के पास थंडर है, उसका भी इस्तेमाल किया नहीं गया, बट राका कुछ कर पाते उससे पहले टेक्नो गेमर्स ने उनको देख लिया, उनको लगा नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि वहाँ पे कोई टाइम मौजूद रहेगा। बट अब यहाँ पे रीटेक अपॉर्चुनिटी है, अटैकर स्किल जो है का अल्टीमेट डिप्लॉय कर दिया गया है रॉसी की तरफ से। जाया का बहुत अच्छा ट्रेड लिया गया, बट दे डोंट हैव इनफ टाइम। अंकिता सी एक बहुत अच्छा ट्रेड लेने में कामयाब जरूर, बट दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड यहाँ पे स्काउट इज स्टिल गार्डिंग द साइड। कोई भी प्लेयर यहाँ पे फिलहाल के लिए शायद डिटेन ना हो, बट एक प्लेयर डिटेन हुआ है एंड स्काउट नोज कि सिर्फ टाइम वेस्ट करना है एंड दे ऑलरेडी हैव डन इट। 6-6 कहा, बिल्कुल कहा 6-2। इस कमबैक की हम बात कर रहे थे, इस कमबैक की हम बात कर रहे थे और स्काउट देखें आपको काफी ज्यादा रिलैक्स्ड है, उंगलियां आपस में एक बार फिर से जी बिल्कुल, और क्योंकि जरूरत भी है उस चीज की मुझे लगा था। बट एक चीज और कि राका जोन बिना अपना अल्टीमेट यूज करे साइड स्विच हो गया, मुझे लगा था शायद एक बार के लिए रोलिंग थंडर में बहुत इंपॉर्टेंट एसेट था इस राउंड का, तो मुझे लगा था जब रीटेक की अपॉर्चुनिटी होगी रोलिंग थंडर आएगा, प्लेस बनेंगे, बट राका जोन उनको पता नहीं था कि टेक्नो गेमर्स वहाँ पे पहले से ही मौजूद रहेंगे। इतना ज्यादा टाइम के बाद आप सोचे कि उनको लगा होगा सीटी पे कोई खिलाड़ी मौजूद होगा, ऐसे मिड पे कोई घूमता हुआ दिखाई दे जाए। लाइक डीप में पिज्जा कोई इतना स्लो आएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था टू बी ऑनेस्ट, बट द मेन थिंग इज कि राका जोन उस अल्टीमेट से लॉकडाउन से बच रहे थे सो दैट ही डजंट गेट डिटेन एंड ऑब्वियसली वो कोशिश कर रहे थे, उनको कोई क्लोज विसिटी में नहीं दिखा एंड दैट वाज अ गुड ट्राई। बट यहां पे एम इन पुश, ओ ब्रो इज नॉट एक्सपेक्टिंग टू हियर बट व्हाट अ फ्लिक। स्काउट एक बहुत शानदार शॉट अंकिता सी को इंस्टेंटली डिनाई किया एंड नाउ दे नो कि भाई ये तो अपने कंट्रोल में है, बाकी मैं आपका ध्यान रखूंगा। सबसे बड़ी चीज अगर आप बात करेंगे इस राउंड के शुरुआत में जिस तरीके से फ्लैश पॉइंट का इस्तेमाल किया गया और स्काउट ने डैश मार के वो आगे निकल गए और सामने वाले खिलाड़ी उनको पता चला कि चलो वहाँ पे कोई तो आ ही रहा होगा, बट मिस करेगा टेक्नो गेमर्स। कोशिश की है उन्होंने बट एंटीडोट एचपी बहुत ज्यादा कम, बट जाया उन्होंने भी एसके रॉसी को यहाँ पे डाउन किया गया। लास्ट खिलाड़ी हाइड्रा फ्लिक बचेंगे और आप देखिए कि इनके पास स्पाइक भी नहीं है और सामने खिलाड़ियों को पता है कि उनके दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास एचपी बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलने वाली। हाइड्रा फ्लिक वो निकलने की कोशिश कर सकते थे और उन्होंने की भी है, बट टरेट को शायद उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया और उससे उनको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता हो। बट अभी भी आप देखें दो खिलाड़ी सामने जिनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है, स्पाइक अभी भी उठाने की जरूरत पड़ने वाली है, बट हाइड्रा फ्लिक को आप देखें उन्होंने अभी तक वो टरेट तोड़ा नहीं, उससे उनकी पोजीशनिंग पता चली और इसी के साथ पेंट शेल से एक किल तो लेके गए। बट चलिए कोशिश बहुत अच्छी, राउंड उनके नाम नहीं आया। From the grave, beautiful kill for him and एक 3 kills, चलिए अच्छा राउंड मैं कहूँगा यहाँ पे, बट शुरुआती दौर का वो शॉट बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, दैट फ्लिक बहुत अच्छा। क्या हीरो का इस्तेमाल उन्होंने वहाँ पे किया, क्या एक कलाइयों का इस्तेमाल किया उन्होंने, मैं यही कहूँगा वो जो चटकाई थी ना उन्होंने अपनी उंगलियाँ, उनके कारण वो बढ़िया शॉट था। बट टीम बैक भी कर रहे हैं in a big lead, not a bit in a big lead, but एक अच्छा राउंड लाइक जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, शायद यहाँ पे लीड मिलेगी भी, मुझे लगा था कि भाई किसी भाई आज शायद अपने कोई गलत करेंगे, बट कोशिश कर रहे हैं कोई भी मौका दे ही ना यहाँ पे टीम अल्फा को। टीम अल्फा एक लेने में कामयाब, उसके साथ स्नैक भी आएंगे एंड क्लीन अप भी किया जाएगा। टीम ओमेगा 2 राउंड्स की लीड पर है। देखिए मैं कहूँगा जिस तरीके से राका जोन और स्काउट साथ में खेल रहे हैं, फ्लैश पॉइंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद हम स्काउट को आगे जाते हुए देख रहे हैं, बिल्कुल टीम वर्क हम यहाँ पे देख रहे हैं और वो चीज़ ज़रूरी भी थी और वो चीज़ हम यहाँ पे देख भी रहे हैं। बट साथ में अगर स्नैक्स की बात करें, वो पीछे खड़े होकर बस इंतजार करते हैं उनकी बारी कब आएगी, वो वहाँ से कब पैरानोया थ्रो करेंगे और फिर बढ़िया तरीके से प्लेस निकाले जाएंगे और वो चीज़ हमें एक्चुअली में देखने को मिलती भी और वो चीज़ उनके लिए बार बार काम भी कर रही है। बैक टू बैक 2 राउंड सेम चीज़ हमने देखा, फ्लैश पॉइंट का इस्तेमाल किया गया, थोड़ा सा आगे गए, फ्रैग्स निकाले गए वहाँ पे, बट अभी भी स्काउट टॉप फ्रैग करते हुए अपनी टीम से ट्रॉलर्स का इस्तेमाल किया गया और स्नैक्स थोड़े से उलझते हुए वहाँ पे दिखाई दिए। एक खिलाड़ी हाइड्रा फ्लिक जिनको बी साइड पे छोड़ा गया था, स्काउट को उन्होंने डाउन किया क्योंकि बिल्कुल भाप तक नहीं पाए कि उनके पीछे कोई एक खिलाड़ी पहले से ही मौजूद था। बट स्नैक्स कोशिश करेंगे ए साइड देखने की, बट अभी भी अटैकर साइड के 3 खिलाड़ी आपको ए पे देखने को मिलेंगे। बट हाइड्रा फ्लिक को जल्दी अपनी टीम से रीयूनाइट होने की जरूरत पड़ने वाली है। अभी तक साइड एंट्री हुई तो नहीं, बट पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट वहीं पे अगर भी छोड़ा तो है, बट मिड जाके थोड़ी बहुत मे बी इन्फो अपनी टीम को वो दे पाए, बट एंटीडोट मॉर्टल को जरूर डाउन करेंगे।
कोशिश है उनके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रैग निकालने की, बट स्नैक्स यूज ही नहीं पता। कैस्केट का इस्तेमाल करके कोशिश तो है यहाँ से निकले, सबसे पहले अपनी टीम के साथ बी पहुंचे, बिकॉज बी साइड पे हाइड्रा फ्लिक पहुंच चुके हैं, राइट? ऑलरेडी उनके पास स्पेस है, बट अब जरूरत है तो स्मोक की सीटी की एंड हाइडाइट का शायद इस्तेमाल रहेगा। बट अभी भी जो स्टैक है टीम ओमेगा का, मतलब द नंबर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स, वो एक ही तरफ ज्यादा है। दे माइट थिंक कि प्लेयर्स आ सकते हैं, बट राका ज़ोन नो विल गेट कॉट ऑफ गार्ड। कोई अंदाजा नहीं हाइड्रा फ्लिक ऐसे आने वाले बिना आवाज दिए, बट जाया देख वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती बिकॉज उनके सामने हाई टाइड है। एंड यहाँ पे हाइड्रा फ्लिक गुड फॉर 3। उसके बाद एसके रॉसी बिग वेव स्नैक्स पेशेंटली खेलेंगे। नाउ एसके रॉसी के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा, बट उनको सपोर्ट करने के लिए हाइड्रा फ्लिक है। गुड फॉर 4, बट फाइनली ट्रेड किया जाएगा। एंटीडोट द नाइस डेज। एंटीडोट क्या राउंड जीत पाएंगे? द आंसर इज नो। एंड एक बार फिर से जैसे कि हमने पहले भी देखा था, स्टार्टिंग के 2 राउंड हर हाथ के लेती है टीम ओमेगा, बट तीसरा टीम अल्फा लेके जाती है। बट इस राउंड में हाइड्रा फ्लिक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अब बिग 4 के बहुत ज्यादा। बट एक चीज और थी, जैसे आप राका जोन की बात कर रहे थे कि यहाँ पे वो फॉल्ट लाइन करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने आवाज सुनी थी, वो सीधा बी साइड पे चहलकदमी करते हुए गए थे, वो बस रुके हुए थे। अगर राका जोन की बात करें, वो इंतजार कर रहे थे कि उनके जो बाकी खिलाड़ी हैं क्या पता मिड से थोड़ा कवर देने की कोशिश करें, और वो चीज़ वो कर भी रहे थे कि सामने से बी मेन से अगर खिलाड़ी एंटर करने की कोशिश करें, फिर फॉल्ट लाइन का इस्तेमाल किया जाए, उनको रोका जाए। बट उससे पहले हाइड्रा फ्लिक हमें आगे जाते हुए दिखाई दे, प्रॉब्लम्स का इस्तेमाल किया तो है, बट उतना कुछ खास कमाल में आएगा नहीं। बट एंटीडोट उन्होंने कोशिश करी, कैस्केड का भी इस्तेमाल किया जाएगा, एक और प्रॉब्लम का इस्तेमाल किया गया, हाई टाइड का ऑलरेडी उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। बट हाइड्रा फ्लिक उनके पास अपना अल्टीमेट है, बट वहीं पे टेक्नो गेमर्स की बात करें, काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट, थोड़ा सा बुरा लगता है। बट एक डिनायल था जो टीम अल्फा करने की ब्रूट फोर्स के साथ घुसने की कोशिश कर रही थी, अलार्म बॉट के साथ वल्नरेबिलिटी एंड द स्वॉर्म, ऑब्वियसली बहुत सारा डैमेज। इट्स अ 4 वर्सेस 4 अगेन। हाइड्रा का जो पहली राउंड एडवांटेज था, मिला था टीम को, एक बार फिर से उन्होंने दिला दिया, भले ही उनकी टीम में ट्रेड हो गए थे। एंड नाउ दे आर हेडिंग टुवर्ड्स ए। इट्स जस्ट हाइड्रा फ्लिक, बट प्लेयर्स अभी भी टीम अल्फा के थोड़े से सोचे समझे खेल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ राका को रखा है, पैन राका इज कन्वेइंग द इन्फो कि भाई ए पे आवाज नहीं है, क्या बी एंड बी पे दे आर प्लेइंग फ्रॉम सीटी। हाइड्रा फ्लिक सीटी की तरफ पहुंच रहे हैं, आंटी को पकड़ेंगे एंड दैट्स गोना बी द थर्ड किल फॉर हिम। पॉसिबिलिटीज फाइनली एंड बैक टू बैक दैट्स गोना बी। राका जोन अभी तक पूरे मैप पे किसी को कहीं भी नहीं दिखे, ठीक है? एंड राका जोन के पास केवल एक फेंस ही है, सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हाइड्रा फ्लिक टू गेट देयर। मुझे लगता है बाकी जो 3 खिलाड़ी वो भाग रहे होंगे। चलो मैं एज दिला के आता हूँ आपको। हो सकता है पहला हमने नाइफ देख लिया और अब पहला हम एज देखने वाले हैं। चलिए एसके रॉसी फाइनली देख लिया उन्होंने, और वो कह भी रहे होंगे जी हाँ ये रहा। बट हाइड्रा फ्लिक देखना ये है कि वो एज निकाल पाएंगे या फिर नहीं। बट वहीं पे अगर आप बात करें राका जोन की, वो आपको बस पीछे जाते हुए देखने को मिलने वाले। चलिए उन्होंने फाइनली सोच लिया कि चलो यार दे ही देता हूँ, क्या ये नाइफ होने वाला है? क्रैकी मोस्ट प्रोबेबली शायद बढ़िया हाई टाइड का इस्तेमाल भी किया गया, बट जा भी कहा रहे हैं वो, मे भी नाइफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा डिले हो रहा है। बट फाइनली शायद वेपन का इस्तेमाल किया जाए। वो देर है, वो खुद ही कह रहे हैं कि चलो ठीक है आ जाओ, पहले नाइफ करते हैं, 1v1 फाइट करते हैं ना, ऐसे फेयर चांस होना चाहिए। बट चलिए इसी के साथ फ्लिक उन्होंने किया नाइफ एंड फाइनली पहला एस और साथ में एक और नाइफ। बहुत शानदार। राका को पता था बिल्कुल मैं तो ये फाइट जीतने नहीं वाला, तो व्हाई नॉट जस्ट हैव सम फन। मेरे को लगा शायद बुलाएंगे हाइड्रा फ्लिक, अच्छा आ जाओ आप एस ले लो, नाइफ बैटल कर लेते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स ही निकालेंगे, he'll just deny the ace। बट नहीं यार, यहाँ पे हाइड्रा फ्लिक ब्यूटीफुल राउंड, 2 राउंड में 9 किल्स, दिस राउंड एस एंड इससे पिछले क्वाड किल, ब्यूटीफुली डन। अभी के लिए जो सिचुएशंस हैं बराबर हो गई हैं, इक्वलाइज हो गई हैं। कौन सी पहली टीम होगी जो डबल डिजिट जाएगी? जिस तरीके से टीम ओमेगा खेल रही है, मुझे लगता है पॉसिबिलिटीज उनके लिए ज्यादा हो सकती है। बट चलिए इसी के साथ सबसे पहले हाई टाइड का इस्तेमाल किया गया और खासकर मार्केट और सिटी साइड को ब्लॉक किया गया है बी साइड पे। मैं बार बार यही देख रहा हूँ कि फ्लिक जिस तरीके से जा रहा है, बट राका जोन वर्सेस फ्लिक मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम तक चलेगा। फाइनली राका जोन ने वो बदला लिया जरूर है, फ्लिक को डाउन किया। मुझे लगता है उन्होंने पढ़ लिया कि कहीं ना कहीं फ्लिक ही है जो अपनी टीम से बहुत ज्यादा दूर जाते हैं। बट जाया मॉडल इस बार डाउन हुए, पिछली बार टेक्नो गेमर्स को हमने डाउन होते हुए इस तरीके से देखा था, बट जाया खुद भी यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। नॉटफॉल का इस्तेमाल किया गया है फेड के द्वारा, स्पाइक एटलीस्ट प्लांट कर दिया जाएगा। बट वहीं पे आप देखें रेकनिंग वो भी उनके पास है। अगर हम बात करें यहाँ पे टीम ओमेगा से हार्बर के पास, देखना यह है कि क्या उसका इस्तेमाल किया जाएगा रीटेक में या फिर नहीं, क्योंकि स्पाइक तो ऑलरेडी प्लांट कर दिया गया। और सबसे बड़ी चीज आप देखें कि ओके चलिए इसी के साथ रखने का इस्तेमाल भी कर दिया गया और दोनों खिलाड़ी बोट हाउस में आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। कोई मौका
मुझे नहीं लगता अब बचा हुआ है इस वक्त टीम अल्फा के पास। गेटिंग कंकर्स एक के बाद एक, उसके बाद फ्लैश पॉइंट कितना यूटल है, जस्ट हैव नो रिप्लाई, बट टेक्नो गेमर्स कोशिश है, लड़ रहे हैं। राका जोन को टेक डाउन जरूर किया, बट उनके आफ्टर शॉक ने इस राउंड को उनसे ले लिया। रीटेक में हमको देखने को मिली टेक्निक ब्यूटीफुली डन, पोजीशन में ना जो पता लग जाती है दोनों बोट हाउस में, यू जस्ट डोंट हैव टू वरी कि भाई पूरे साइड में क्या क्या और चेक करना है, एंड दैट्स अ बिग गुड विन। मेरे हिसाब से तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है टू हैविंग द अल्टीमेट ऑन रीटेक। इसके बाद भी आप देखें कि उन्होंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया ना, उसके बाद भी फॉल्ट लाइन और बाकी सारी चीज़ों का हमने इस्तेमाल होते हुए वहाँ पे देखा। आफ्टर शॉक तक का भी इस्तेमाल हमने देखा, जबकि पता है कि चलिए ठीक है सामने जो प्लेयर हैं वो एक बार के लिए कॉन्कस हो चुके होंगे। उसके बाद हाई टाइट का भी इस्तेमाल किया गया, चलिए ठीक है डिवाइड कर देते, एक प्लेयर दूसरे साइड पे रहेगा, और वो चीज़ हमें देखने को मिला भी। और चलिए इसी के साथ राउंड्स को आगे बढ़ाते हैं। स्कोर हो चला है 8-9 का, और मैं बात कर ही रहा था टीम ओमेगा की, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं डबल डिजिट में सबसे पहले वो देखने को मिल सकते हैं। बस मुझे ये देखना है कि राका जोन रोलिंग थंडर का क्या वो अब इस्तेमाल करेंगे, बट स्काउट पूरी तरीके से फंस गए थे, उनके पास कोई मौका नहीं था। एंटीडोट आप बात कर ही रहे थे कि उनके पास ऑपरेटर है, एक शॉट और 2 किल, ब्यूटीफुली डन। हाइड्राफ्लिक अभी अपनी टीम के लिए काम फिर से कर रहे हैं, बट एंटीडोट इज स्टिल फाइटिंग, इज स्टिल फ्रैगिंग, एंड दैट्स द 4th किल। Is he gonna get the ace? No, Snacks वो उनसे ace ले लेंगे। Snacks नहीं करना था, but what a shot was that? Wow, incredible. पता भी नहीं चला होगा मुझे लगता है। चलिए मॉर्टल को तो हेड पड़ा, बट एसके रॉसी जिस तरीके से लाइन ऑफ फायर में वो आए, बट ये वाला शॉट हाइड्रा फ्लिक पे काफी बेहतर, और ये जिस तरीके से शॉट उन्होंने अंकिता पे कनेक्ट किया बहुत ज्यादा बेहतरीन। बट स्नैक्स उससे पहले ही मुझे लगता है वो प्लेयर तक पहुंच गए थे, इसलिए उनके पास कोई मौका बचा नहीं था, शायद पता ना हो पॉसिबिलिटीज, बट ठीक है। एंटीडोट खुश हैं क्योंकि भाई 21 फ्रैग्स ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं। ऑपरेटर एक बार फिर से उनके हाथों में। बाकी सामने अगर बात करें टीम अल्फा की, थोड़े बहुत लाइट फायर पे देखने को मिलने वाले, बट एंटीडोट वो नहीं पीछे हटने वाले। हाइड्रा फ्लिक को एक बार फिर से डाउन किया गया, और मुझे लगता है 11-8 बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकेगा। बट स्नैक्स एंड जाया वो भी ज्यादा पीछे है नहीं, टेक्नो गेमर्स एंड एसके रॉसी डाउन, लास्ट 2 खिलाड़ी। और चलिए उन्होंने थोड़े बहुत एफर्ट्स दिखाए और इस वक्त राका जोन को डाउन किया, और इसी के साथ उनका लॉकडाउन भी हमें देखने को मिलने वाला है। बट दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से इतना ज्यादा दूर। अंकिता आपको मिड पे देखने को मिलेंगी, वहीं पे मॉर्टल की बात करें अभी भी मिड टॉप पे। स्नैक्स उनकी पोजीशन जा चुकी है, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, बट स्टिल ही गेट्स अंकिता। नो वे, अंकिता ने इन्फो दी जरूर थी, बट मॉर्टल उस पर जल्दी कैपिटलाइज नहीं कर पाए। इसका प्राइस अंकिता को भरना पड़ा। अब मॉर्टल अकेले बचे हैं 1 वर्सेस 3 में। 11वां राउंड ऑन बोर्ड फॉर टीम ओमेगा, एंड दैट्स लाइक अ बिग थिंग, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं अटैक में टीम अल्फा को। एक चीज है जिसका इंतजार कर रहा हूँ, रोलिंग थंडर। मैं मजाक स्टिल वेटिंग। यस, मेरे को लग रहा है कि एक पोस्ट आने वाला है जिसमें कहा जाएगा मेजी स्टिल वेटिंग फॉर द रोलिंग थंडर। बिल्कुल, बट राका जोन वर्सेस हाइड्रा फ्लिक की फाइट्स भी काफी ज्यादा बार हुई और हमने देखा भी है, और मुझे लगता है कि हाइड्रा फ्लिक 2-3 बार कामयाब हुए। राका जोन को हमने 1 बार कामयाब होते हुए देखा। टेक्नो गेमर्स को मार्शल पे देखेंगे, राका जोन को आप देखें 8 ट्रैक्स पे बैठे हैं, अल्टीमेट के पास। बट एंटीडोट एक बार फिर से तैयार, और सबसे पहले मॉर्टल पकड़े जाएंगे। ऑपरेटर हाई टाइट का इस्तेमाल किया जरूर गया, बट इसी के साथ कैस्केड से थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश की जाएगी। कोव का भी ओके, कोव नहीं, बट चलिए हाई टाइट का उन्होंने भी इस्तेमाल कर ही लिया है। किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली में वो जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे कोई है भी या फिर नहीं है। बट चलिए स्काउट उन्होंने फ्लिक को डाउन किया, बट एंटीडोट अभी भी तैयार विद दैट ऑपरेटर। बट एसके रॉसी स्नैक्स को डाउन किया। टेक्नो गेमर्स आप देखें बढ़िया तरीके से एंगल बना के बैठे हुए, उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद एक बार के लिए कोई रश करने की कोशिश करें। बट जाया अभी भी उनके पास अपना अल्टीमेट है, बट सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि 3v4 का सिचुएशन है। चलिए उसको 4v2 करिए, क्योंकि एंटीडोट वो रुकने को तैयार नहीं। उसके बाद अपने रेकनिंग का इस्तेमाल करके नाउ ही नोज दिस वन ऑन द लेफ्ट, एंड उसके ऊपर पुश करने का प्रयास। बट एसके रॉसी यहाँ पे उनको हार्बर फिलहाल क्लियर करेंगे, बट टू बी ऑनेस्ट एंटीडोट इज कोशिश साइड के अंदर जाने की आइडेंट का इस्तेमाल करके स्काउट स्पैम करेंगे, हेडशॉट मिल जाएगी पहली ही बुलेट पे, एंड दैट्स अ बिग राउंड वंस अगेन फॉर टीम ओमेगा। 12-8 मुझे लग रहा है, बिकॉज यूटिलिटी एक बार देख लीजिए टीम ओमेगा के पास, बट टेक्नो गेमर्स चांसेस हैं बहुत कम विद दिस फैक्टर ना। चलिए फाइनली इसी के साथ मैच पॉइंट पे हम चलने वाले हैं, और आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द रोलिंग थंडर।
मे बी ये आखिरी राउंड है यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है एम इन पुश आने वाला है टीम ओमेगा के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, बट मैं टीम अल्फा के साथ था तो खैर ये चीज होना लाजमी, बट खैर एंटीटोड काफी ज्यादा बढ़िया वो खेल के गए हैं। मैं एक बार को डर गया था। हाँ होता है, बट का जोन थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। रॉसी की बात करें, बट एक बढ़िया गेम जरूर हमें देखने को मिला, जिसकी हम बात कर रहे थे। हमें नाइफ चाहिए, हमें एस चाहिए, वो चीज देखने को मिला। एस टैग पूरी तरीके से करके बैठे, बट वहीं पे अगर डिफेंडर्स की बात करें, उनको भी शायद उनको पता चला कि चलिए ठीक है यहाँ से प्लेयर्स आने वाले हैं। कैस्केड का इस्तेमाल किया गया, बट उसके साथ साथ फॉल्ट लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्नैक्स की पोजीशनिंग पता नहीं थी, बट फाइनली रोलिंग थंडर का इस्तेमाल किया गया फ्लैश पॉइंट के साथ, बट उसी के साथ नाइट फॉल का इस्तेमाल। और आप देखें लॉकडाउन का भी इस्तेमाल किया गया, बट कम से कम फॉल्ट लाइन से वो लॉकडाउन तोड़ा जाएगा। और अभी भी हाइड्रा फ्लिक उनके पास अपना अल्टीमेट है, क्या फाइनली वो इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि सारी यूटिलिटीज यहीं पे यूज कर ली गई, खासकर अल्टीमेट जिस तरीके से हमने यूज होते हुए देखा है। बट एसके रॉसी अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी। हम मान रहे थे कि शायद यहीं पे मैच समाप्त हो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी भी मैच में बहुत सारी चीजें बाकी हैं। इतनी कंफ्यूजन है फिलहाल के लिए। जस्ट आप एक बार देखिए, दे हैव टू लुक आफ्टर ए, कहीं से सीटी लीक हो रहा है, कहीं से कुछ लीक हो रहा है, एंड बहुत मुश्किल है बिकॉज रॉसी अभी डीप सिटी पहुंच चुके हैं। आखिर के 2 प्लेयर्स बचे हैं, इनके पास ऑपरेटर सेव करने का एक मौका है, बट स्काउट अपना डैश बर्न करते हुए एसके रॉसी है पेशेंटली जाया। ओह माय गॉड, व्हाट अ स्विंग, व्हाट अ वाइड स्विंग दैट वाज। कोई रिप्लाई नहीं है उसका, देयर इज नो रिप्लाई टू दैट पॉप एंड स्विंग। चलिए कम से कम सीजन हॉर्न का इस्तेमाल करके थोड़ी बहुत कोशिश की, बट जाया की बात करी जाए, उन्होंने अपना लॉकडाउन इस्तेमाल किया। टेक्नो गेमर्स वो ज्यादा तेज निकले। लॉकडाउन इस्तेमाल हो तो गया, बट जाया वो जरूर डाउन हो गए। बट स्काउट अभी भी उनके पास ऑपरेटर है, और मुझे लगता नहीं अंकिता सी तक वो लॉकडाउन पहुंचा भी और आपको वो बड़े आसानी से सर्वाइव करते हुए दिखा देंगे। बट मॉडल की बात करें, उन्होंने स्काउट को डाउन किया, और इसी के साथ ये वाला राउंड टीम अल्फा के नाम। यस दे आर स्टिल इन द गेम, बट देखना ये है कि कब तक, क्योंकि ज़्यादा मुझे उम्मीद है ऑपरेटर तो उठाया नहीं गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। अटैकिंग मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करते हुए दिखाई देंगे, बट एंटीडोट अभी भी मुझे लगता है कि ऑपरेटर वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके पास उतने क्रेडिट्स होंगे। बैक टू बैक काफ़ी राउंड जीते हैं, बट एसके रॉसी उनको पता है, एसके रॉसी को पता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा मौका है उनके पास कि कुछ वो कर सकते हैं। बट हाइड्रा फ्लिक उनको अब वो गेम दिखाना पड़ेगा जिस रेस को हम जानते हैं, वो अल्टीमेट तो स्टॉपर। देखना ये है कि कब तक देखने को मिलने वाला है। डबल साजल प्ले, हां, बट यू नो एंटीडोट की तरफ से हमको वो देखने को जो मिल रही है ऑपरेटर, दैट्स इनक्रेडिबल। आई डोंट थिंक व्हाट फ्लैश दी पैरानोया ड्यूलिटी का सपोर्ट है, एंटीडोट है यहाँ पे, एंड बहुत मुश्किल होगा प्लेयर्स के लिए एंटर करना। एंड नाउ उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगी हाई टाइड भी कैस्केड, टू बी ऑनेस्ट। एंड दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम है। द रैप अप इज ऑलरेडी हियर, ओमेगा ने चारों तरफ से घेर लिया, दे आर स्टक। स्काउट, बट यहाँ पे स्काउट एक बड़ा वेव उनकी तरफ से पहले शॉट ले लिया जा सकता था, बट अभी फिलहाल गेम को पोजीशंस पता है। एसके रॉसी राका जोन को टेक डाउन करेंगे, जिसका प्राइस स्काउट की वजह से पे करना पड़ रहा है राका जोन को। एंड अब राउंड चेंज होता हुआ शायद हो चुका था, बट नो एंटीडोट इज स्टिल अलाइव। 4K किल फॉर हिम, स्पाइक डाउन है, रिकवर करना है, स्काउट ऑलरेडी स्पॉन में है, ही इज गोना पिक, एंड उसी के साथ मॉर्टल को कर दिया जाएगा डिनाई। तो एक बात तो तय है, 4 टाइम लैंड चैंपियन बिल्कुल। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे स्नैक्स, अगर पिछले वाले राउंड की हम बात करें, जिस तरीके से पैरानोया का उन्होंने इस्तेमाल किया, शो स्टॉपर की उन्होंने आवाज सुनी और उन्होंने कहा जी नहीं, हम ऐसे तो एंट्री आपको दिलाने से रहे। बढ़िया तरीके से पैरानोया का इस्तेमाल किया, पूरा ब्लॉक्ड हो गया, उनको पता भी नहीं चला क्या क्या चीजें आई हैं उनके ऊपर। कोशिश की गई कि चलिए ठीक है राउंड अपने लिए निकाला जाए, बट इसी के साथ ये जो मैच था यहीं पे समाप्त होता हुआ, और टीम ओमेगा वो जीतते हुए आपको दिखाई देगी। और एंटी ने बात की भी थी कि 4 टाइम तो आपको नहीं बनने देंगे, और वो चीज उन्होंने पूरी की। मुझे लगता है एसके रॉसी इसमें मेन आप कह सकते हैं कि एक खिलाड़ी जिन्होंने पहले ही मना कर दिया ना आप वो टाइम लैंड नहीं हो सकते। मेरे को था यार, और मुझे लगा नहीं था इतने ज्यादा सीरियस है वो। मुझे लगा था कि शायद भाई नहीं, अपनी बातों को लेके गेम में तो सीरियस दिखाई दिए। हाँ, गेम में काफी सीरियस थे, बट मेनी कांग्रेचुलेशंस टू टीम ओमेगा जिस तरीके से एंटीडोट खेले हैं, हार्बर के साथ ऑपरेटर चलाई है उन्होंने, मजा आ गया। उसके अलावा स्काउट की तरफ से क्या ही फ्रैग्स देखने को मिले थ्रू आउट द गेम। राका जोन की तरफ से इज नॉट मच ऑफ इट। सबसे ज्यादा तो हमने जो मिस किया, एक तो वो फ्रैग था, और उसके साथ साथ था वो रोलिंग थंडर। आखिरी राउंड भले हमको जरूर लास्ट सेकंड राउंड में देखने को मिला, बट बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इस पूरे के पूरे गेम को और भी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। वो था हार्बर का गेम। भाई
फर्स्ट टाइम मेरे को देखने को मिला है एंड जिस तरीके से यहाँ पे प्लेयर्स ने खेला दैट वाज सो गुड। देखिए मैं कहूँगा कि स्नैक्स जैसे हम पहले बात करते शायद डुअल कंट्रोलर हमें देखने को ना मिले, बट जिस तरीके से मैंने उन्होंने कहा वुमन शायद खेला आएगा। है, भाई वो वुमेन ही खेलते ज़्यादा। कम से कम आप ये कह सकते हैं कि स्नैक्स ने इस बार अपने श्राउडेड स्टेप्स का इस्तेमाल उतना ज्यादा नहीं किया है, क्योंकि उनको भी पता है जब भी वो करते हैं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्लेयर आता है और उनको स्पॉट करके मार के चला जाता है। तो इस बार उन्होंने पैरानोया पे स्टिक करना ज्यादा सही समझा और उसका उन्होंने इतना ज्यादा बढ़िया तरीके से फायदा उठाया है। आप देखें स्मोक्स तो उन्होंने किया ही है, पैरानोया का इस्तेमाल बढ़िया किया और जिस तरीके से उन्होंने अपने अल्टीमेट का इस्तेमाल किया वो भी काफी ज्यादा बेहतर। बी साइड पे जाने के एटलीस्ट उनके काम आया और प्लेयर्स ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे। बट यस ओवरऑल एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ये गेम गया है। टीम ओमेगा जीती जरूर है और वो विनिंग स्ट्रीक भी टीम अल्फा की खैर टूट गई। लैंड चैंपियन की टूटी मेरे को तो सबसे ज्यादा बुरा थोड़ा सा वहां लग रहा है। सॉरी अंकिता सी बट दिस इज द रियलिटी फॉर नाउ कि अभी के लिए एंटीडोट आज तैयार थे। उन्होंने मैं कह रहा था ना छुपे रुस्तम है, भले ही कुछ दिखा नहीं रहे, भले ही कुछ बोल नहीं रहे, पर तैयार है और ऑपरेटर के साथ वो एक बड़ा जवाब उन्होंने दिया। एसके रॉसी अडैप्ट कर रहे थे सारी चीज़ों को, शायद तैयारी में लगे हुए थे, ऑब्वियसली ज़्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए इस सिचुएशन में, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट एंटीडोट की तरफ से जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो बहुत बढ़िया थी। लाइक वो राउंड बहुत अच्छा था टू बी ऑनेस्ट, एंड जो बैक टू बैक हाइड्रा फ्लिक ने अपनी टीम की तरफ से किया है वो भी बहुत बेहतरीन था, बिकॉज रेस गेम प्ले एसेंट पे बहुत अमेजिंग है। बिल्कुल, और थोड़ा बुरा भी लगा उनके लिए कि चलिए एक शो स्टॉपर वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, बट उससे पहले इतनी ज्यादा यूटिलिटीज आई। बट उसके पहले वाले राउंड में हमने जिस तरीके से देखा कि हर एक यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया गया, हाई टाइट दोनों साइड से हमें देखने को मिला और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ए साइड पे वो चीज़ हमने देखी थी, रोलिंग थंडर इस्तेमाल किया गया, उसके बाद हमने नाइटफॉल का भी इस्तेमाल देखा, ट्रॉलर्स का भी इस्तेमाल वहीं सेम जगह पे हम देख रहे हैं। राका जोन करे भाई हमको तो छोड़ो, हमको तो थोड़ा सा तो सांस लेने दो, निकलने की कोशिश कर रहे थे जी। एक बढ़िया रोटेशन हमने वहाँ पे जरूर देखी। बट आप ये कह सकते हैं कि ये टेम्पेस्ट इन्विटेशनल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और जिस तरीके से यहाँ पे प्लेयर्स ने खेला है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, और आई नो ऑडियंस ने पूरी तरीके से एंजॉय करा होगा क्योंकि वो रेगुलर स्ट्रीम्स देखते हैं, बट जब इस तरीके की स्ट्रीम देखते हैं जहाँ पे पूरी कम्युनिटी एक साथ आती है और वो खेलते हुए देखने को मिलते हैं, मजा दुगना हो जाता है। ये एग्जीबिशन मैच जो था ना, ये लाइक टू बी ऑनेस्ट ऐसा मैच था जो हमें यूजुअली तो बहुत कम देखने को मिलता है। प्लस इसमें इतने बेहतरीन प्लेयर्स थे, उसके साथ जो नया एजेंट था ना उसने कनेक्शन जो गेम के साथ है वो 4 गुना कर दिया, एंड उस पे एंटीडोट का वो परफॉर्मेंस थ्रू आउट द होल गेम मजा आ गया देख के। चाहे आज हमको एसके रॉसी ऑपरेटर पे उतना ज्यादा नहीं दिखे, पुराने वाले वो जेटमिन हमारे एंटीडोट दादा वापस आए हैं, एंड जिस तरीके से उन्होंने वो ऑपरेटर चलाई ना मजा आ गया। मुझे एक बार लगा था कितने टाइम पहले नजर आते थे, मुझे लगा था एक बार के लिए कि एसके रॉसी भी ऑपरेटर के साथ देखने को मिलेंगे, और जो मैं शुरुआती दौर में बोल रहा था कि एसके रॉसी को हमें 4K रॉसी बोलना चाहिए, बट ऑपरेटर पे खैर वो हमें दिखाई नहीं दिए, बट सामने से एंटीडोट जरूर हमें दिखाई दिए और वो कारनामा वो करके भी गए। जिस तरीके से ऑपरेटर वो जो बी एंट्री पे शॉट्स लगाया था, मॉडल को हेड लगा और सामने एसके रॉसी, उनको तो पता भी नहीं चला आखिरकार हुआ क्या। बट फेड अगर अंकिता सी की बात करी जाए वो वाला शॉट काफ़ी ज़्यादा लाजवाब था, बट साइड एंट्री करने की कोशिश थी और वहाँ पे एंटीडोट के द्वारा रोका गया। एक बार ये भी आप कह सकते हैं कि केजे जिस तरीके से दोनों केजे ने खेला, चाहे हम मॉडल की बात करें, आप जाया की बात करें, बट लॉकडाउन का परफेक्ट इस्तेमाल किया गया। कम से कम अपनी टीम के लिए उन्होंने थोड़ी बहुत स्पेस क्रिएट करी थी वो, बट भले उतना आगे ना जा पाए, बट कम से कम टीम के लिए स्पेस तो क्रिएट किया गया। बिल्कुल, लाइक यूजुअली ना एसेंट मैप पे एस्ट्रा एंड केजे का जो अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है कॉस्मिक डिवाइड लेन्स को कट करने के लिए, एंड उसके बाद वो लॉकडाउन का प्लेसमेंट ताकि वॉल बैंग ना हो, लाइक बहुत मजा आता है उस कंट्रोलर के साथ कॉम्बो में। बट मुझे सबसे ज्यादा मजा ही रीटेक पे हार्बर का आया। अगर हार्बर आपके पास टिल दी एंड जिंदा है विद द कॉम्बो ऑफ सोवा फेड, बहुत आसान है रीटेक करना, एंड ट्रस्ट मी एक बहुत ज़रूरी एजेंट था। मेरे को जो फील हो रहा है कि इस प्रकार का एजेंट जो रीटेक में अपनी टीम को बहुत हेल्प कर पाए, बिकॉज वैलोरेंट में मुझे काफ़ी बार लगता है कि रीटेक करना ना सबसे मुश्किल है। अटैक में भी डब्ल्यू की काम कर जाती है, कभी कभी प्लेयर्स के हेड्स लग जाते हैं, बट मुश्किल होती है रीटेक करने में, बिकॉज कोई ना कोई अपनी टीम का मर जाता है और कुछ ना कुछ हमेशा कम पड़ जाता है। और उसी के बाद अब हार्बर आया है, तो हार्बर चाहे अकेला हो चाहे टीम के साथ, भाई वो अल्टीमेट के साथ जो रीटेक करने का मजा है ना वो बहुत बेहतरीन। देखिए मैं कहूँगा कि हाई टाइड का इस्तेमाल जिस तरीके से अल्टीमेट के बाद किया गया है, खासकर वो बी साइड पे, कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा मजेदार था, क्योंकि हाई टाइड से एक चीज ये हुई कि चलिए कम से कम आपको पता है कि अगर प्लेयर हैं
तो दोनों एक साइड है, नहीं तो दोनों दोनों सेपरेट पे आपको वो देखने को बिल्कुल। मिलने वाले। कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि दोनों ऐसे एंगल बना के बैठे होंगे, आप ऐसे बीच में जा नहीं सकते, वो चीज कम से कम वो थी नहीं। और उसके बावजूद राका जोन को आप देखें क्या सब बैठे हुए थे, बस स्पॉट लाइन, फ्लैश पॉइंट, हर एक चीज का इस्तेमाल करके उसके बाद उन्होंने साइट एंट्री की है। बट ओवरऑल अगर आप बात करें काफी ज्यादा बेहतरीन मैच। स्कोर कार्ड का इंतजार किया जाएगा, जल्दी स्कोर कार्ड आपके स्क्रीन पे देखने को मिलेगा और देखेंगे कौन कितना ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके गया। भाई वैसे यूजुअली हमको स्काउट ना बहुत देखने को मिलते हैं ब्रीच में, बिल्कुल बड़ा टॉक्सिक गेम है, बहुत मेरे ज्यादा। को बहुत मजा आता है सब ब्रीच, खासकर बी साइड पे, स्पेशली कहीं भी हो यार, बट ब्रीच के साथ जो वो अनॉय करने में मजा है ना, सच्ची एक ब्रीच में इनकी फीलिंग आती है। बट राका जोन तैयार थे उस सारी चीजों के लिए, वो टाइमिंग नहीं बैठ रही थी बिल्कुल, मतलब रोलिंग थंडर के साथ सारे प्लेयर्स उछले हुए नहीं है। बट चलिए नजर मार लेते हैं फटाफट से एक बार स्कोर कार्ड के ऊपर, किस प्रकार का परफॉर्मेंस आया है इन सितारों के द्वारा। हाइड्रा फ्लेक आप देखें अपनी टीम से, टीम अल्फा से एमवीपी बनते हुए दिखाई देंगे। एंटीडोट की बात करें, टीम ओमेगा से एमवीपी बनते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल अगर एमवीपी मैच एमवीपी की बात करी जाए तो आपको एंटीडोट दिखाई देंगे। 358 का एसीएस स्कोर उनके पास है। राका जोन की बात करें मात्र 89 का एसीएस स्कोर उनके पास हमें देखने को मिलेगा। बट टेक्नो गेमर्स आप उनकी बात करें, उन्होंने भी बेहतरीन गेम प्ले दिखाया है। जेट खेलते हुए 12 फ्रैग्स उन्होंने निकाले हैं। एसीएस स्कोर की बात करें 159 का। अंकिता सीन के द्वारा भी एक बढ़िया गेम प्ले देखने को मिलता हुआ। बट यस एंटीडोट जिस तरीके से उन्होंने खेला है और वो जो 4K उन्होंने निकाले थे, दैट ऑपरेटर एसीएस स्कोर काफी ज्यादा 358 का। एंटीडोट भाई मतलब बहुत मिस की थी ये स्नाइपर, बड़े दिनों बाद आज देखने को मिली और मजा आ गया। एमवीपी बने हैं इस एग्जीबिशन मैच टेम्पेस्ट इनविटेशनल के, बट टीम अल्फा थोड़े से अनलकी रहे इस गेम को जीतने में। एंड जो चौथी बार लैंड चैंपियन का टैग था वो भी छीन लिया गया एंटीडोट के द्वारा। एंटीडोट ने कहा था, वो कहना चाहते थे कि मैं चाहता हूं तुम बनो, बट उन्होंने एक बात बोली, आई एम वरीड फॉर यू अंकिता। बिल्कुल, तो मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ कि तुम बन पाओगे या नहीं। बट अभी एंटीडोट ने वो खुद छीना है, खुश होंगे, तो खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। 13-9 के साथ एक सिंगल डिजिट स्कोर लाइन रही। ज़्यादा अच्छा और गेम जा सकता था। लाइक टीम अल्फा की शुरुआत तो बहुत बेहतरीन थी, एक्सप्लोसिव स्टार्ट फ्रॉम देयर साइड, बट टीम ओमेगा का कमबैक। तो भाई देवियों और सज्जनों, ये बात तो तय है कि मेजी जिस टीम को पिक कर ले वो टीम कभी जीत जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आएगा आएगा क्रैकी, वो दिन भी आएगा जिस दिन हम लोग इस चीज़ के बारे में ज़्यादा थोड़ी और चर्चाएं कर रहे होंगे। बट ओवरऑल अगर बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि टेम्पेस्ट इनविटेशनल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा और ये एग्जीबिशन मैच जिसकी हम बात कर रहे हैं और भी ज़्यादा लाजवाब। और आप ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड मैच हमें देखने को मिला है, दोनों साइड से कोशिशें की गई। टीम अल्फा ने शुरुआती दौर में कोशिश करी, टीम ओमेगा ने कहा कि चलिए ठीक है पहले आप खेल लीजिए बाद में हम खेलेंगे, और ऐसा खेले कि मैच जीत के गए। मजा आया ना बहुत But ज्यादा, there's a lot more to come। बहुत मैं ज्यादा। आप लोगों को बता रहा हूँ, अब भी तो शुरुआत हुई है इस चीज की। यार मेरा बताने का बहुत मन है आप लोगों को, सच्ची बता रहा हूँ। होल्ड ऑन, डोंट गो एनीवेयर। देखिए इतना कह सकते हैं कि 4 चांद लगने वाला है। यार मैं कह रहा हूँ ये ऐसी रात होगी जिसमें सितारे टिमटिमाते हुए नजर आने वाले हैं, एंड ये इस मैच से भी 4 गुना ज्यादा शायद बेहतर हो। I mean, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज वो वाइब अलग है, वो फील अलग है, एंड ऐसा वाइब बहुत कम है। बिल्कुल, बट चलिए इसके साथ चलते हैं हमारे होस्ट के पास। बट बहुत बढ़िया मैच था, चलते सीधा होस्ट के पास। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं आपके पास तुरंत आने वाला है। Guys, give it up for our winners! Should we call on the MVPs? Oh, absolutely. I think they deserve to be here for sure. Absolutely. Can we please have it for both MVPs from both teams, Antidote and Hydra Flick? Please come on stage. Congratulations, gentlemen. Great game. I want to begin with you, man. Did you forget that Harbor's supposed to be a controller and not a duelist? Like top fragging with Harbor. How was that? I mean, that's my game style. Like whichever agent I play, like try to go for my intuitions, try to go for my kills, and support my team. So that's my natural game style. And how did you feel about Harbor as a controller? I mean, today the first time I played the agent, I think it's a very interesting agent, to be honest. And from my understanding, I think you need one more controller in the squad with this to
just balance the side. But the way you played, dude, as I was watching you play so well, I was like, buddy, nerf incoming. This agent looks really powerful. Mamba? Yeah, no, I was wondering. As always, you went all guns blazing. You're playing Raze, and it's no surprise that you were trying so hard. But Andy came out on top at the end, even with the controller. How do you feel about that? I mean, we tried, yeah. We couldn't counter Anti's operator, and I mean, who can? He's too good with it. He's too smooth with it. And also, they had an advantage. They had two controllers. First of all, Rossi is playing it for the first time, so it was a little weird and difficult to enter the site and figure out how we're gonna execute a attack. So we kind of messed up on attack. We can say that. And they played really well. So also, Tanmay, big fan. Hey. Thanks, bro. Good game. I want to quickly ask you, it's not been that long since you started playing Harbor, right? Like you just got access to it. Are you already seeing some potential strategies that you can apply in game using any of the abilities? Well, 100%. Like that agent is, as I said, it's very interesting, and so being an IGL myself, I think I can put that into the Indian meta and the South Asian meta. Do you think it's going to be highly picked on the competitive scene? I'm not sure about that, but I think I like the agent. I think my team can surely play in the future events. Got it. I think he took it too personally when I told him that Umar ho gaya lag raha, but he picked up the operator like the good old He days. always And counts went me all in the boomer squad, by the way, guys. Listen, man, that's where you're headed. Absolutely, that's where you're headed. It doesn't help I'm standing on your side right now. Anyway. Guys, please give it up for the two MVPs of both the teams. Either Flick and Antidote. Alright guys, it's been an amazing evening and we have a couple of big things coming up before we wrap up today. First, I would like to call on stage Jem Low of Riot Games to tell us what the future holds in store for us. Round of applause, guys. Oh, I'm left here alone. It's okay. So everyone, just want to say thank you again for coming down. We know like Friday night, there's probably elsewhere you want to be, but we're so thankful you're here. Just celebrating Harbor and the inclusion of just like India in Valorant is a great way for Riot to just like pitch our tent here and say, hey, we're really here in India. So to Ashish and team, no pressure. We're just expecting lots more hyper-local activities and events to come in India. Yeah. So, just beyond Harbor, right, fans can actually look forward to Indian representation in esports. We have like global esports here, an Indian esports organization. Ooh, I know, yeah. So they are actually one of the 30 franchise teams that are playing in the Valorant Champions Tour next year. So we hope you give them all their love, and we really are rooting for you. Yeah, so there's so much more up ahead, like I mentioned. We really appreciate all the support. And we hope that, just like our beloved Indian community here will be with us every step of the way. Yeah, so one more thing. As you know, and I'm sure you agree, music is a big part of the gaming experience. So, yeah, in true Riot fashion, we have a very special musical performance coming up for you. I would love to invite the MCs back on to tell us a bit more about the next act. Keep it going for Jem Low, everyone! Yeah. Thank you, Jem. Alright, Jem is right. The music in Valorant is pretty special. Like, it began with Die For You and I Am the Raja. Oh, yes. It's caught everyone's eye. Oh, yes. I was telling Sukamal outside saying that just the amount of songs that you have released, I think that Riot Games is now no more just a gaming company, it should also become a music company at this point in time. Yeah! Was it you? Like, are you testing your own jokes by saying a friend said it? Of course not. Can you focus on Harbor, please? This is about Harbor. The reason we're here. It's like you're obsessed with me. Alright, he's right though. The I Am the Raja track has been quite the rage for Harbor. I heard it and I couldn't stop humming it. And there's a lot of credit for the incredible music. It goes to the artist Riot Games works with. The Raja collaboration was truly a global effort with the producer from Riot, Johnny Altepter based in LA, and of course Arba from Israel, Mangal Survaran from Dubai, and TNS right here from Mumbai. We have these phenomenal talents
for you right here today. They'll be performing tracks from Valorant, created in collaboration with Rioters in the Riot Games Los Angeles campus. But before we watch them set the stage on fire, we're going to go behind the scenes to see what inspired this track. That's right, it's me, but with a blue jacket. I have here with me TNS. Sir. TNS, अर्ज किया है. Look at my eyes, what do you see? I'm more than an average man. I'm a maverick. I can make flowers grow on battleland. Break a mountain with my bare hands and step back and cause a literal avalanche. Shoot bullets while it's traveling. Oh, क्या लिखा है? How long did it take for you to come up with that one? To be like completely honest, one day. One day? Yeah. Tell me, how was it working on the track, man? Because the track is a banger. Man, the track which the great folks at Arba like sent me, it kind of like spoke to me, and I just like did the rest. Just did the rest. In a day, you wrote everything. Yes, sir. Man, the song is really good. That part of the song is something that I keep singing it. Especially, I'm trying to get better at the last part, which is shoot the bullet. Shoot a bullet while it's traveling. Shoot a bullet while it's traveling. Sir. I'm looking forward to your live performance today as well. Thank you, And sir. how do you like the fact that people in the audience after the video got released, everyone has been just praises? Well, it has to be. If you've heard the track, you've probably heard him as well. This is Mangal. Mangal, man, this track is too good. Okay? Thank you, man. And I have a question, is that how was your experience working with Arba on this track? I mean, man, huge shout out to those guys because without Arba, there is no Raja to begin with. And on top of that, because of Arba, one of my biggest dreams came true. To answer your question, working with Arba is like working in a whirlwind. It's just throw whatever you can at them and then they will absorb absolutely everything. I worked with them on another occasion a long time ago with two of Arba. That's Harel and Itai. How they work is just give me a couple of hits, give me a couple of recordings and give me some more, and then what they do is they cut them all up and then they make their own riff. So it's like, okay, now I know what to do. So I just cut them up. I record as much as I can, like 2 folders of 10 pieces each. And they'll pick a couple. They'll pick a couple. It's easy for me, man. Do you think using Bansuri and sitar localized instrument added to the entire vibe of Harbour being an Indian, cool Indian character? Absolutely. I mean, the soundscapes that come from India are iconic. And if you want to represent an Indian character, you got to bring in some Indian sounds. And I think the Bansuri is funny story. The Bansuri is something that I use primarily in all my electronic music or music in general. And that's one of the main reasons Arba had contacted me and they said, hey man, we have a chance to do this. Are you in? And I'm like, what is this for? It's like Valorant. Say no more. Say no more. I'm in. What do you play? I mean, okay, for now I play Reina. I'm a Reina main for sure. I'm not toxic, but good. I love her. I love what she stands for as well. Oh, good. Man, this track is super good and I'm kind of looking forward to the live performance as well of it. Thank you so much, Mangal. Absolutely, it's my pleasure. Looking forward to the track once again. Done. The comments are insane. Which is your favorite comment before we go? I mean, there are 2, but I'll just say one of them is just it's like the beat slap Go on. The beat slaps harder than my dad's belt. That is a true Indian child PTSD comment. I don't know if it's appropriate, but it just like we were all having breakfast today and it just cracked us all up so hard because we all resonate with it in a weird way. But yeah, that is one of my favorites. Awesome. And if you haven't heard the track so far, I think you should go right ahead and comment on your best. The beat slaps harder than insert punchline. Thank you so much, Mangal. Thank you so much, man. That's your camera. That's my camera. And here we have the fantastic team behind the track, Raja. It's Arba. Oh, okay. I have a question, right, to you guys. You've worked on a lot of tracks before, and Mangal was just telling me about it's like a whirlwind. You throw any kind of music at you, you put it all together, and you generate this amazing track. So the question is, how long did it take for the Raja track to finally complete from the origin till the release? Why don't you start and we'll pass it on? Yeah, you take it.
The mic. So my name is Or. Or. I'm a quarter of Arba. Hmm. Arba means 4. So we have 4 quarters here. Four in Hebrew. And I'm sorry for my voice. We've been exhausted from all the traveling and everything. It's been an exciting journey. So to address your question, the initial demo, in fact, didn't take us long. The initial demo, maybe 2 days, I would say. The initial demo, 2 days. we sent it off to Riot. Yeah. Our good friend, main producer from Riot US, Johnny Alterpeter, our main contact there, a music supervisor, he has an amazing ear. He came up with the idea to kind of fuse Bollywood music with hip hop. It has like an Indian flair. Right. At that point, like Itai was saying, like before this even came about, Itai was saying, man, I think like the next agent is going to be Indian. Oh, you predicted Yeah, it? like, What? he totally predicted it. Yeah. Oh, you prepared it already. So in fact, when we had our initial discussions before this even came about, Arel and Itai, they know Mangal for so many years, and they said like for sure we're gonna like bring Mangal on board. At that point, we didn't know about Tienas. Yeah. So it's like it was the missing variable. Link, yeah, that was needed. Who discovered TNS for the track? Like, who was like, this is the sound? Oh yeah? Itamar, what was it about TNS that you're like, this is what's needed for Agent Harbor's release for the track, The Raja? So we've been checking out some artists, some rappers, because we saw that the hip-hop scene in India is crazy. Yeah, it's growing up. And we listened to some tracks and we made a short list. And then we heard Tienas for the first time. And I told Or, like, dude, this is it. This is it, Like, look no further, You were speaking about the fact that you got the drop. You're like, we're not happy with this. We're going to keep working on the drop till the deadline doesn't come in. While everyone had approved. This doesn't happen usually. Everyone approved, you stop working. You're like, no, I'm going to keep making it better. I'm Arel. Yeah, Arel. Third quarter. The third quarter. Yeah, basically is when we have the first shield of the track and everything, we start finding ideas and we find something that we like at the beginning. Yeah. And then we didn't like it. And then we change it. And then we change it a few more times and I think this last drop that you hear in the final result, it's a result of at least 15 kind of takes of what we feel. More than that. 40. Yeah. 40 takes of drops. There are unreleased drops that you guys have. You need to understand, there's a lot of stuff that happened in the rain here. Even when we worked on the trailer for the album, which contained at the end of it something that Riot really liked. Right. In terms of our started as a drop. Yeah. And then what happens is we felt that this one has to be in the track somehow, right. Because we have a different drop and we like that one, and we figure out the way to implant everything, not lose any kind of ideas that we all had. Yeah. And we are really excited and to share with everybody that. I'm looking forward to the live version because it's a 6-minute version which has like a lot going on. Final question to you. You knew that the Indian agent is going to come up very soon. Yeah. Do you play Valorant? I didn't know. No, the thing is we don't have a lot of time of playing. Okay. But we do like Valorant. We do like Riot, like from League of Legends and everything. I didn't really know that it's gonna be an Indian agent, but I felt this is the region that is gonna, like a tactical point of view from Riot, I thought it's gonna be the Indian agent. I'm gonna be backstage and then come in front when you guys go up on. Okay, excellent. All right, and now back to you. At the world from the eye of the Horus. If you Alexander the Great, then I am the Porus. Coming straight from the mud like I am a lotus. So हाथियों का बल कैसे सकेगा तू मुझे रोक अब देख तू कैसे मैं लड़ूं तुम लोगों से ऐसे ना डरूं तरूं मैं जिससे मैं तरुण पानी पे चलूं मैं जिससे मैं वरुण चाहे मैं जीऊं या मरूं जो करना चाहूं मैं वही तो करूं आता है तू ना करीब तू बेटी चीप जब तक कटे ना तेरी ये जीप Better believe you're gonna be pick up a seat, get your team. I'm the king of kings.
Brother in arms in a battle. You all gonna die if you act like a vandal. Bring the realms to reality from every angle. This is the public service announcement from Mumbai to the rest of the world. I am a Raja. I am the Raja. भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना. तू मेरी तरफ आना. आ गया तो होगा फिर तनाजा ना. ये Turn left. Steering compromised. Recalculating. Warning. Change of plans. Avda. Damage detected. Recalculate. It's been a long day. Okay, a long couple of months. Relic secured. I've never seen anything like it. We had found plenty of ancient things in our line of work. But this was different. And he knew it. Sorry, Varun, but I'm gonna need that. Just give me the artifact, and you can go back to being the commander's errand boy. I won't ask again. Agent Batra has gone rogue. Find the bastard! Now, instead of artifacts, Realm hunts me. Luckily, I have it under control. You're late! Yeah, and you're heavy. Welcome to Valorant. Chill. This is the public service announcement from Mumbai to the rest of the world. I am a
look at the after party that's already started here. I was checking the chat, okay? Chat mein bol rahe the, is it over? And I was like, far away from it. Yes. Agar aap thoda camera, if you pan around, if you see, there are vlogs being made. The party is already started. And it's time for the grand finale to this remarkable evening. It's been fun and games all this while, but it's going to get even better. Because coming up now is a live performance by the phenomenal team behind the Raja collaboration. Ladies and gentlemen, put your hands together for Arba, Mangal and Tiana!
a loner, so हाथियों का बल कैसे सकेगा तू मुझे रोका देख तू कैसे मैं लड़ूं तुम लोगों से ऐसे मैं डरूं करूं मैं जिससे मैं तरुण पानी पे चलूं मैं जिससे मैं फरूं चाहे मैं जीऊं या मरूं जो करना चाहूं मैं वही तो करूं आता है तू ना करीब तू मेरी जीप जो भी पहले ना तेरी ये जीप Better believe you gonna bleed pick up a seat can you see I'm the king of kings brother in arms in a battle you all gonna die if you act like a vandal bring the realms of reality from every angle this is the public service announcement from Mumbai to the rest of the world I am a Raja
From the after horse. If you Alexander the Great, then I am the force. Coming straight from the mud like I am a lotus. So हाथियों का बल कैसे सकेगा तू मुझे रोका? देख तू कैसे मैं लड़ूं, तुम लोगों से ऐसे ना डरूं. डरूं मैं जिससे मैं तरुण, पानी पे चलूं मैं जिससे मैं वरुण. चाहे मैं जीऊं या मरूं, जो करना चाहूं मैं वही तो करूं. आधा ही तू ना गरीब, तू मेरी चीप, जो मेरा तगड़े ना तेरी ये चीप. Better believe you gonna be, pick up a seat, get your team. I'm the king of kings, brother in arms in battle. You all gonna die if you act like a vandal. Bring the realms to reality from every angle. This is the public service announcement from Mumbai to the rest of the world. I am the Raja. एक बार जोर से जनाज़ाना तू मेरी तरफ आना आ गया तो होगा फिर तनाज़ाना ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना Yes I am the Raja Yes I am the Raja From Mumbai to the rest of the world
जनाजा ना तू मेरी तरफ आना आ गया तो होगा फिर तनाजा ना ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना 'Cause I am the Raja 'Cause I am the Raja Great, then I am the force coming straight from the mud like I am a lotus. So हाथियों का बल कैसे सकेगा तू मुझे रोका देख तू कैसे मैं लड़ूं तुम लोगों से ऐसे ना डरूं तरूं मैं जिससे मैं तरुण पानी पे चलूं मैं जिससे मैं वरुण चाहे मैं जीऊं या मरूं जो करना चाहूं मैं वही तो करूं आता है तू ना करीब तू बेटी चीप जब ना कटे ना तेरी ये जीप better believe you're gonna bleed pick up a seat get your team I'm the king of kings brother in arms in a battle you all gonna die if you act like a vandal bring the realm to reality from every angle this is the public service announcement from Mumbai to the rest of the world I am a Raja I am the Raja भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना तू मेरी तरफ आना आ गया तो होगा फिर तनाजा ना ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना 'Cause I am the Raja 'Cause I am the Raja What do you see? I'm more than average man I'm a maverick, I can grow flowers on a barren land break a mountain with my bare hands and step back and cause a literal avalanche should've been about us traveling आज तो बुझाए मेरी जैसा मैं टरेंचुला ना है कोई तोड़ मेरा जब से पूर्वजों का ज्ञान मिला मेरे जैसा मिलेगा कोई ना तू और चाहे जो भी था सबकी कबर मैंने खोदी क्या तुम लगाओगे बोलियां कम पड़े गोलियां चंद्रगुप्त में मौर्य या किला तू लोरिया come to me and you just gonna die that's really a given I am invincible and you are invisible see that's really a difference get out of my way or leave the world the choice is yours I don't kill my enemies I play with them that's what the toys are for from Mumbai to the rest of the world I am the Raja भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना तू मेरी तरफ आना आ गया तो होगा फिर तनाजा ना